And good morning and hello everyone, good morning. And this is the first session we can say for the containerization journey. Okay. When I'm talking about the containerization, definitely there are two tools will definitely come in your mind. First is Docker and Kubernetes. But if we don't know what is the history of Docker, why the Docker came, we will not able to utilize properly. Correct. So I would like to start from the virtual machine first, and then we will move into the Docker, and then we will move into the Kubernetes side. Cool. Thank you. I know you also aware about this part. That's why you all are here. Okay. Cool. And I'm sharing my screen. I hope you are able to see my screen as well. Correct. Can you confirm, please? Confirm. Yes. Yes, we can Yes, see. yes, sir, we can Awesome. see. Thanks. Thank you. Thanks a lot. I can say in short, this is a high salary job in 2025, obviously. Okay. And with the help of Docker and Kubernetes. So I can say if you don't know anything, if you are till now, if you're not aware about anything, you can start with Docker and Kubernetes also, and there may be chances 15-20 LPM job is possible only with Docker and Kubernetes, with the some basics of Linux, with the some basics of some other cloud knowledge, basic knowledge. But if you're good into the Docker Kubernetes, you can get a job also. Okay. Because there are a lot of independent jobs for containerization, Docker and Kubernetes, which we can achieve it. Cool. Thank you. Okay. Now, if I will ask you this image, how much percentage you are able to understand in this image? 20%, 30, 50, 60, 90. Number. I need a number. 100%. Okay. What about others? What about others? 90. Okay. Cool. 50. Okay. Cool. Sure. At the end, we have to make it 100. Okay. That is our intention. Okay. Cool. Now, this is the actual agenda which we have to complete it, not by today. Okay, not by today. It is not possible. Okay, today at least we will install the Docker or we will set up our environment. Okay, and by from tomorrow onwards we will start making the practicals. Okay, but because why Docker came, I have to take the virtual machines as well, and then after Docker I will move into the Kubernetes as well. If we would like to discuss some 2 minutes on this image, first tell me how much percentage you are able to understand in this image. First, tell me, because guys, if you will think it, then only you will able to achieve the things. 90. Who is zero? Wala? No one is zero. Anirudh zero. Okay. Uma zero. Shiva zero. Okay. Cool. Zero. 10%, 20% wala. Almost zero. Good. Fine. Okay. At least write it zero also. That is also fine. Okay. So let's start. Let's understand on a high level. Okay. High level means quickly. Okay. Quickly. Most of the cases we know that we need an image. Okay. Now the question will come. What is image? What is image? नहीं पता होना चाहिए ना. What is image? Go ahead, Package, unmute and speak up. package Packed, or bundle of packed application. version, packed version of the application. Okay, where everything is available. Binary, library, configuration, whatever is required, dependencies, all things has been packed into one box that is called image. Image which is not in running condition means image which can be transportable. Okay, it is transportable box. If it's a running box, it is a container. What is container? Running application is called container, right? Running lightweight application or running lightweight image. Running image is known as container. Cool. Now the question will come because from where this images will come, two options are there. If it's a ready-made, you can directly download it. If it's available into the Docker app, and there are around 20 lakhs images are available. If your requirement is from this 20 lakhs, you can directly download from the Docker app and you can use it. If you are saying, no, sir, my requirement is very antique, it's not available in Docker app, then no worries. Write a Docker file and build it and create an image and then run your application. Got it? Guys, everyone understood this image? Yes, no? The idea of this image or idea of the background of the Docker. Yes. Everyone, right? Now, if you created 1, 2, 3, 4, 10 containers, 15 containers, 20 containers, okay, you can able to manage manually. But let us assume you have millions of containers like Netflix application. There are millions of containers. If I will check it over the internet, okay,
Netflix, 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 containers, UNTINER, containers, running containers daily. RUNN, running containers daily. Okay, can you guess it? Can you guess it? How much containers every day are running? And why that many containers are running? Two questions I have. How many and why? If the count Mil is big, why? millions of containers running daily basis on Millions of Netflix. containers, agree. Millions of containers are running every day. Why? For high Uh, availability and High better the availability. load, distribute load. lots of load, the number of users connected at every time. Correct. Number of users are there. Okay. As soon as you will open the Netflix application, as soon as you click on any of the movie, okay, one of the container with volume has been attached for you. Volume is a movie. Okay. It will be attached for you. One pod will be get created. Guys, if you are not able to understand, no worries. Okay. I will teach all these things. Okay. I will teach, but I'm telling you. Okay. Chalo, first I'm telling you how many Netflix containers are running. The answer is around 1 million or on stands 100,000, 10,000 lakh. 1 lakh containers per day are running in the Netflix. What is 1 lakh? Indirectly, I can say 1 lakh users are constantly watching the movies or watching the serials in the Netflix application. Correct? Right? Means two things are there, users and data. When the users and data are getting connected, that is called pod. This is a Kubernetes concept. When data and volume, data and user is getting connected, one of the running pod or running application is happening. That's why 1 lakh containers are running every day. Now the question is, because if the containers are 10, 15, 20, we can manage manually. कर सकते हैं manually, right? But if 1 lakh containers are there, is that possible? You can run the manual commands? No, no No, way. it No, will be very difficult. Okay, no, we can't do it. Okay, impossible. Then the Kubernetes will come into the picture, container management tool, container orchestration tool, and we will move into the containers. Got it? And we will move into the Kubernetes side. Okay. This is yes. the complete idea. It will take 1 week of time to develop, to make you expert in this thing. Okay, cool. All clear? At least you get the idea what we are going to do in the next 1 week. Everyone, yes, no. Everyone, yes, no. Yes, sir. Yes. Yes, Everyone, yes. 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 everyone, write karo yaar, write in chat box, so that I will feel that yes. Thank you. Thanks a lot. Okay. Yes. Mm, because why we are doing this? Again, question. Okay. Because we have to develop the architecture. Okay. And there are 6 varieties of architectures are there. I don't want to complicate the things now. Okay. But I can say in short, we will going to discuss these two architecture, monolithic and microservice-based architecture. Okay, where microservice, when the microservice came, purely Kubernetes based or purely containerization based architecture means if you are going to develop the Docker containers, application on Kubernetes, you must have to develop the microservice based architecture. Okay, what exactly it is? Small part, small independent part will run in the application. Okay, small independent part will run into this application. If by any reason one of the part, or let us assume one of the part is not working, it the other part will still work and the customer will not get to know that one of the part is down. This is called microservice based architecture. All applications are running independently. Clear? Yes, no. Yes. Getting my point, guys? Yes, no, clear. Can I get into the chat box? Clear? Cool. Thank you. Because on the another side, what is monolithic? Can anyone tell me what is monolithic? All services clubbed together in the single server. All services are dependent on each other, right? If let assume front end, middleware, database. If middleware is not working or if database is not working, front end will also not work.
everything is dependent on each other. Okay, that is called monolithic architecture. We will develop both. दोनों बनाएंगे. Okay, this is project 3, this is project 2. विकास कब बनाएंगे? Next question. Hmm, in the month of 2nd or 3rd of September बना देंगे. Means next 1 week, within 5 days, we will develop this microservice based architecture completely. 1 week is more than enough. Okay, Sir, we'll develop second and third only. Okay, cool. sir, Now you know. Go ahead, go ahead. sir, how you have to explain as monolithic in one line? Can you explain microservices Monolithic. in one line, sir? Like definition. Microservices are the small services running independently. That is called microservice. That has been means the Okay, small containers are created for every service. Okay. When I'm talking about sir. monolithic, front end, middleware, database, 3 tier applications dependent on each other. If one is not working, second will also not work. These are dependent on each other. That is called monolith. Sir, Cool. are these Thank you. small service called atomic service? What you're telling? Sir, are these small services called atomic services? We can say, not a big deal, we can say. Okay. Okay, sir. Cool. Yeah. Now see the image of Docker and Kubernetes, both the thing. When I'm talking about Docker, look like a whale, correct? Containers or images are there, and he can move from one place to another. That is the work of Docker. What exactly I would like to say? Building of images, running of images, movement of image from one place to another, that can be achieved with the help of Docker. Got it? He can take more than one image, 10, 15, 20, 100 images in one shot, and he can move from one place to another. That is the use of Docker. When this logo came into the picture, okay, what you feel, how it's look like? कैसा दिख रहा है? Steering of a ship. Ship. Yeah. Steering of a ship. Or where is the ship? Here is the ship. Correct? Hmm. Means here he is in container building, container running, moving of container. But here he can manage the complete Docker itself. What exactly it is? It is a container management or container orchestration tool. A Docker orchestration tool, but don't say Docker orchestration tool. It not looks good. Okay, container orchestration tool, that is Kubernetes. Make sense? Yes. Yes, लिखा है इसमें सो गया. ठीक है? Controlling Docker. Yes, we can say. But don't say into the interview. Controlling Docker will not be a good word. Container management system. If you are not able to remember the keyword orchestration, you can say container management system, that is Kubernetes. Guys, you get an idea. We took first 15 minutes and you have a little bit idea कि भाई करने क्या वाले हैं. Okay. Now let's come into the actual syllabus. Okay. Now, for the beginner, I can say whoever is expecting up to 5, 7, 10 LPA, okay, you have to be aware about virtualization. सबको आना चाहिए. It should be aware about everyone. Okay. But yeah, when we will move more into that part, means when you will be into intermediate, Docker will come into the picture. When you will be into the expert level, Docker and Kubernetes, you have to combine it. But I'm starting from a very basic virtualization. What is virtualization? Accessible with the help of internet. That is called virtualization. Correct? Machine, someone else's computer accessing with the help of internet is known as virtual machine. Machine accessible virtually is known as virtual machine. Machine accessible with the help of internet, someone else machine, that is called virtual machine. Okay, virtual, when how we are connecting to the virtual machine, because virtualization has been enabled on that machine, that's why we are connecting that machine virtually. Okay, so here this two definition came into the picture. Okay, how the virtual machine has to be get created. Now guys, tell me the answer, how the virtual machine has to be get created. Can you give me the answer? Using the We make hypervisor or VMware. Good. Guys, see this image. See this image. And then give me the answer. I need a better answer.
Go ahead, answer. So it basically shares the host operating system and the hardware resources to make a virtual environment on our computer, which can run independently. Correct. We need a hardware. We need a hardware means CPU, memory, disk, Ethernet, internet, okay, networking. Okay, that is hardware. Over the hardware, obviously you will use any of the operating systems. Currently, in my case, I'm using a Windows. Okay, right? Most of the people are using the Windows. Yes. Over that, there is a one software that is called hypervisor software is available. What is this hypervisor software? What is the name of the hypervisor software? VMware, VMware. Hyper-V, VMware. VMware, or There are so many. There are so many. Guys, give me the names. There are so many. VMwares. Yes. Hyper-V, Oracle Oracle Oracle, VirtualBox. 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 यही दो Okay. है मुझे। VirtualBox, VMware. These are the two very common softwares available for hypervisor. There is a dependency. There is a dependency. Okay. What is the dependency? Yes. This will work in your machine or not. Right? Now I am coming into my machine, host operating system. This is my host operating system. Open your task manager. Open your task manager. Everyone, open your task manager. And can you tell me in your machine, the virtualization is enabled or not? Okay. How to check it? Like, how many people knows how to check the virtualization is enabled or not in your machine? You can use the Program and hypervisor or not. Service, program Service. and Okay. features No. I went to service. Service में तो नहीं दिख रहा. नहीं, यहाँ Performance से नहीं पे दिखेगा सर. प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके वो We इनेबल have to करना check पड़ता है the उसको. Hyper-V services. हाइपर वी में. एक performance बंदे ने पे गलत आंसर दिया है. See, I will tell you. One person has take you into the different way. You went into the different way. और कई आंसर है. Sir, in the task manager, go to performance. You will see virtualization I enabled. went to performance. Okay, And in then the bottom, below the logical processor. correct. Here the virtualization is showing is enable. Guys, tell me in your machine performance CPU and it is enable or disable. If it's enable, just type E. If it's disabled, type D. Go ahead fast. E. Yes. क्या बात है? D. एक बंदा है D वाला. दो. ठीक है. तीन. What about others? Only three people has D. Okay. Well, three people will not able to run the virtualization at this point in the machine. Three people, four. Okay. What about others? Only four people has a D. Cool. ठीक है. Five. Good. Six, seven. अरे my God. चलो. Not capable क्या होता है भाई? What is not capable? कुछ अलग आंसर है. Share the screenshot. Asta Priya. Share the screenshot. What is not capable? चलो. Guys, I can understand 10 people as the disabled. Okay. चल कोई बात नहीं. Then what you can do it? My laptop is a कौन सा एसर वाला यूज कर रहा हूँ. I will enable virtualization virtualization in Lenovo laptop. Bhai, whatever is your laptop, okay, type that laptop, HP, Lenovo, Acer, whatever it is, okay, and enable virtualization in Lenovo laptop. Then there will be some BIOS setting will come. You have to type F1, F2, go to the BIOS, and there is a enable option is there. Okay, just do that activity. That's it. Got it? Okay, you have to restart your machine. So don't do it in the class. It will take 15 minute time. So don't do it right away. After the class, you can enable the BIOS. Okay, here how to enable the virtualization in BIOS. I'm giving you this 2 minute video. Okay, whoever has the D. Okay, so in the chat box, I given the link. In the WhatsApp group also, I'm giving you the link. Okay, so that you don't have to worry. Successfully build master slave. Very good. Environment. कहाँ पे बिल्ड करा था दोस्त? ये लोकल मशीन. कौन है भाई ये? शिव, वेर यू डिड इट? कहाँ पे बिल्ड करा? Yeah, local and Amazon Linux and GCP one node event. My God, Amazon GCP local machine master job. Well, you understood the level? लोकल मशीन को AWS GCP सबसे कनेक्ट कर दिया. That's it. Multi cloud master slave configuration this person did.
Yes, Arpit, very good. Multi-cloud master slave configuration we did. Guys, we learn in the yesterday session. Okay. So whoever has not did the practical, please do it. Please do it. You will enjoy it. Okay. You will feel that, see, I told you that local machine is possible, AWS is possible, GCP, yes, you can connect everyone. Okay. When you tell this type of things in the interview, interviewer will be get impressed. Okay. Please, guys. And guys, if someone is doing it, please appreciate also. I really love this type of work. Okay. Please appreciate. Please, please, please. I want because someone is putting the effort. And the thing is like, sorry to say, but you can ask the doubt with Shiva also. Shiva is expert in this, right? I can say. Yes, no? Yes. Shiva, if anyone feeling any problem, you can help him. Okay? Yeah, sure. There is Cool. some Thank you. troubleshoot made in Linux. I will help you. Correct. See, sometimes we made it mistake of sometimes some missing thing happen. So yes, we can enable. Okay, Okay. cool. And guys, I'm giving this video how to enable the virtualization in BIOS. If you want, you can enable it also. Okay, I'm giving it to the chat box also. Okay. Thank you. Okay. Now I'm coming here. Yes, if the virtualization is enabled, then you can create a hypervisor. Now, how we can do the hypervisor? Obviously, we need a software. ORACL Oracle VirtualBox VM VirtualBox down. Okay, I went into this place. This is the software. Now condition apply, guys. Condition apply. Okay, what is the condition? If your memory is not 50% free, okay, whatever is the current memory, if your memory is not free, ignore this practical. Got my point? Yes, no. Okay, got it. Right? If you're already using 90% of your memory, if you will use the hypervisor, your machine will not able to survive. Okay. So don't do this practice. Got it? Clear, everyone? Now I'm installing this hypervisor software. I'm giving this link. Okay. I'm giving this link. Okay. And I'm installing downloading in Windows. Guys, who is doing where? Who want to do it in front of everyone? Who has a heavy machine? किसके पास है heavy machine? बोलो. Are fast? Who has a heavy machine? Anil, you are on mute. Mute पे बोल रहे हो? Yeah, I have 16 GB machine. I can do that. 16 GB. You want to do this practical? Yeah, I will. Chalo, go ahead. Then guys, Anirudh will demonstrate what I did. I have Anirudh, virtualization is enabled in your machine, correct? Yes, yes, it is. Virtualization is enabled. 50% memory is free, or at least 40-30% memory is free, correct? Yeah. Cool, thank you. Okay, and go into this link. I given the link into the chat box. Download Windows software, which is of around 167 MB. Download it. Okay, so now share your screen. Guys, everyone, whoever want to do this practical, go ahead. Please start with me parallelly. Okay. If you have a heavy machine, if the machine is not heavy, don't do this, please. Go ahead. Go ahead, go ahead. Fast, 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 Anil, fast. Yes, guys, Anil is sharing the screen. And yes, definitely, I allowed. Yeah, Anirudh, you can. Yes, download the software. Cool, software is downloaded. Very good. Just double click on it and run it. Yeah, run it. Sir, Perfect. Accept. 50% ही चाहिए accurate? No, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. See, this is not a mandatory practical. Okay, this is not a mandatory practical. If you want to see hypervisor in your machine, you want to create a virtual machine in your machine, then you can do it. You can try, or after that you can remove it also. Okay, if you don't want, if you're not interested for old approach, this is an old approach, I can say. Okay, 5 years back people are doing it. सर मेरे पास में जो वर्चुअल मशीन है, मैं जब भी लिनक्स इंस्टॉल करता हूँ उस पे तो लोड खाता है वो, मतलब लैपटॉप तो हैंग। ऑब्वियसली बात है, तभी दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग 50% फ्री होना चाहिए. लोड खाता है, ये लोड ही तो लेगा. वर्चुअल वर्क फिर भी लाइट वेट है. अगर VMware वर्क स्टेशन जो लेयर रहता है ना, वो इंस्टॉल करोगे तो मशीन ही बैठ जाएगी तुम्हारी. Yes. So guys, this is not for what we can say the old machines. Okay, if you have a heavy machine, then only do this practical.
Yes, the software is installed. Perfect. Guys, see now what happened? The software has been installed. Means we are already into the hypervisor layer. Getting my point? Yes, no? Anirudh, show me your CPU memory one time. Show me your CPU memory. We can say 16 GB. CPU is free around 67 GB. Is 67% memory is getting used. Okay, fine, no worries. Okay, cool. Thank you. Cool. So I'm taking the screen, guys. We reach into the hypervisor layer. Right now, we are into the hypervisor layer. Now, if you will see my this image, we reach into this place. Now, what we need? अब हमें क्या चाहिए? Guys, now what we need? बोलो बोलो fast. We need to install missions like OS. भाई, a virtual machine. We will Need create a to virtual install machine. Okay. ISO image. आप need a virtual machine. Okay. तो virtual machine again required operating system. अब कौन सा operating system लोगे? Tell me. कोई सा भी नाम बोल दो. कोई Ubuntu. सा भी ले सकते हैं, Ubuntu. विंडोज भी ले Ubuntu. सकते हैं, लिनक्स Ubuntu का भी the ले सकते Ubuntu. 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 कोई और कुछ और choice वाला? CentOS. Ubuntu CentOS. ही best है सर. हाँ Ubuntu है, CentOS है, और भी बोल दो यार, अभी तो प्रैक्टिकल शुरू हुआ है. Whatever you want, I will give you homework ना. हैं. रेड हैट. RHEL. Windows. जो Debian चाहिए, also. what जो चाहिए, whatever you want. Okay. Now we will download the guest operating system and we will configure and we will create a virtual machine manually. Okay, manually or 5-year-old approach. Okay, but before doing this practical, I would like to discuss some advantage and disadvantage. Okay, what is the advantage? क्या advantage है to doing this? Who will give the answer? What is the advantage of doing this? We can connect to the multiple operating system, or you can use the multiple operating. From a single hardware, we can use a multiple machine. In the real time, what is the use case? In the real time, guys, go ahead. Tushal, Namrata, please go ahead. Answer. We can access it from any. For We can testing. access any So suppose we have orchestration. to. Orchestration. We can say our small data center. Correct. Okay. Chalo, let me open my Oracle Oracle VirtualBox. Okay. This is my Oracle VirtualBox. Okay. At this point, I have one. Let's assume I have multiple machines. Okay. I can say I have a small data center where my data is with me, my machines with me. I can manage from the single place. Yes, no? Agree? Yes, sir. Okay, Yes. possible. Okay, I can say. But what is the disadvantage? ये तो ठीक है, advantage हो गया. नहीं अभी advantage. One more big advantage is pending. Guys, what is the big advantage of creation this thing? Advantage. I'm looking for advantage. Maintenance is easy. Maintenance is no costing. Yes. We can Agree. copy the entire image. Taxes. Cost effective. We can use multiple environment at the same place. But we need a heavy hardware. That is a problem. Okay. The one advantage is like, let assume I develop a machine. Okay, I develop a software or application. I can test in Ubuntu, CentOS, Windows, or whatever the flavor I want to test. From a single machine, I can test multiple places. Agree? Let assume Tushal is a developer. Okay, Tushal develop one application. Now he has to test in Linux. He has to test in Windows. He has to test in CentOS. He has to test in some Alibaba virtual machine. Okay, or Oracle or Alibaba operating system. Okay, which is exit or not, I don't know, but he has to test it. So either he has to take the hardware, 5-6 laptops. Practically, it is not possible, right? पता है 5 years back ऐसा होता, 10 years back. Companies are giving this type of different flavors. You have to test your different teams are there we are doing the testings. Right now, with the help of this, we can able to test the applications. Got my point? Yes. Right? Yes, Cool. sir. Okay. Sir. Yes. Okay. So this is one of the advantage. Now, chalo, disadvantage we will talk after 5 minutes. Okay. Abhi 2 minutes mein you will realize the disadvantage. Okay. I will not say anything. Chalo, let's start the practical. I am starting the practical. Now, disadvantage find करना है ना. This. Now we will find what we are going to develop it. We have a base machine. We are installing some other operating system on site. Okay. Now advantage we discussed. Disadvantage I am not discussing it. You will realize in next 2 minutes. Okay. I am starting the picture. Okay. I am opening the virtual box where the images are available. Okay. Where the images are available.
चलो लेट्स टेक द इमेज. बोलो कौन सी लेना है? Ubuntu. You are telling Ubuntu. Ubuntu. Okay. Ubuntu. Yes, I took the Ubuntu. I will give the direct links. No worries. Ubuntu. Okay. Close. Ubuntu 25.4, 2.6 GB. थोड़ा बड़ा हो गया. Ubuntu 24.10, 2.3 GB. चलो. Let me down. Okay. I started downloading it, and it will take. Now I'm giving you this link. Guys, this is not for everyone. Okay, this is not for everyone who want to be do the practical for virtual machine, who has a heavy machine, then only do this practical. Got it? Otherwise, see in my machine, see in the Ashish machine, Tushar machine, or whoever will share the screen, uski screen mein dekhenge. Okay, not for everyone. I am repeating again. It is a outdated approach. It is a fail approach. Okay, but you have to be aware about it. Why we are learning because this? Because I want to teach you the Docker. If you will compare with this, then the Docker will be very easy for you. Got my point? Okay, so I given a link and I started downloading. My God, aa gayi. Got it? Right? It will take 1 hour because your internet is not good. I will show my internet. Okay, my internet speed is around. कितनी है? It is a good internet, correct? 250. Guys, this is a good internet, correct? 2.260 Mbps is a good internet in India. Okay, but aa gayi bhai. It will take 2 hours. You understood the disadvantage? First disadvantage, heavy in size. Clear? By heavy size में तो heavy है, right? Now it's a zip file. If I will unzip it, 2 GB will become the 6 GB. Are yes, no? Yes. Yes. Okay. Now actual size is 2 GB. Okay. 2.3 GB. अब मैं उसे extract करूंगा तो it will become 7 GB. जब मैं उसके अंदर application डालूंगा या something I will update it, again it will become 10 GB. Correct? Minimum. Okay. Now let assume this is developed in dev environment. अब मुझे QA में भेजना है. कैसे जाएगा ये बताओ? 10 GB का size, how it will go to QA? मुझे वापस अपलोड करना होगा. I have to upload somewhere. Correct? Yes. Yes, sir. Or that person has to download again. Obviously, right? Yes, no. और ये Yes, sir. dev It is. QA टेस्टिंग तो 10 times होगी. dev QA की टेस्टिंग तो 10 बार करनी पड़ेगी. So is this possible, feasible with this 10 GB size? We can move from one place to another. No. So this is the disadvantage. Virtual machines are very heavy in size. If it's heavy in size, transportation is very difficult. Okay. अब transportation में 10 GB का हमारा फ्रंट एंड आ गया. ओके, 10 GB का हमारा मिडिलवेयर आ गया. 10 GB का हमारा डेटाबेस आ गया 100 GB का. ओके, और योर एप्लीकेशन इज ऑफ 150 GB और 200 GB साइज. पूरी एप्लीकेशन को माइग्रेट नहीं करना है, डिप्लॉय करना है. फुल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट विच इज ऑफ 200 GB. कर पाओगे? बोलो. Using this approach now. क्या बोला? What are you doing? टाइम कंज्यूमिंग है सब कुछ. टाइम का 200 GB कैसे अपलोड करेंगे अभी बैठ के? पहले तो ये बताओ. अपलोड क्या करूं 200 GB? इसको पूरा 2 दिन लग जाएगा सर. डाउनलोडिंग अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा. करेक्ट? यस सर. फेल अप्रोच फेल गया 5 साल पहले. फेल हो गया ये. गॉट इट? दैट्स व्हाई लाइट वेट इमेजेस केम इनटू द पिक्चर. दैट इज डॉकर. थोड़ा सा कम कर पाएगा डालियो. अब करेंगे ना, डॉकर में आएंगे ना. 5 मिनट, गिव मी 5-10 मिनट्स. आ रहे हैं डॉकर. Okay, guys, you understood the problem? ठीक है. This is the internet speed, I can say. This is not sending it directly. Okay, we have to use some external tool to fetch it quickly. That can be possible. Guys, please mute others. Please. Arun, Namrata, mute. Okay, cool. So I'm canceling it and I'm giving homework. भाई कल डाउनलोड करके आना. ठीक है. I'm giving a link. Okay, here a link. नहीं, this is not a link. Here is a link and I'm giving a homework. तो करना है, कल डाउनलोड करके आना, कल करेंगे. You understood the disadvantage? Yes, no? यस सर. सर अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे वर्चुअल मशीन पे तो किस टाइप के रहेंगे सर? जैसा ऐसे ही रहेंगे? बोल देना ये 5 साल पुरानी अप्रोच है. We are working in Docker and Kubernetes. We are not using it.
Okay. Simple. Okay. अब your question is good. If the virtual machine question came, भाई अभी आएगा जिससे पैसा मिलेगा. Yes, here is the approach. Got it? बेसिकली सर देखेंगे. वो डिफरेंसेस ये पूछते हैं कि क्या एडवांटेजेस थे डॉकर के ओवर अ वीएम, सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन डॉकर. Correct. Perfect. Obviously, you have to take it into the Docker side. Okay, because you can say my project is on Docker, containerization, Kubernetes. और see, virtual machine में ये approach fail है. भाई ये तो success है. Correct. EC2. Correct. Yes, no. Yes. Cloud, EC2, Google Cloud virtual machine. Okay, Azure virtual machine is success. EC2 is success. ये approach सही है. This is fail for us. वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं. They are also doing. Amazon का भी hypervisor है. They have installed it, but उनको कहीं move नहीं करना. They are giving the virtual access to you. Correct. They have created heavy data centers. भाई ये इसी तरह से बनाया उन्होंने. Approach is same only, but we are accessing directly with the IP, so it is a lightweight for us. Agree? Yes, no? Correct. Yes, sir. That's it. Yeah. Okay. So this approach got failed, but I'm giving homework to you. You can download it, whatever the flavor you want. Okay. From this website, Ubuntu, CentOS, कल कर देंगे. I'm not doing today. I will do it tomorrow. Okay. I have downloaded already, but I'm giving homework. कल 5 minutes में we will complete it. Okay. Cool. Guys, all good till now? Yes, no? Any question? No, sir. Any question? Any question? All good? No, sir. Sir, all Yes. good. Cool. Yes. Mute yourself, mute yourself, mute yourself. Okay. Guys, I will tell you one trick. Whenever you want to unmute, space bar. Use the space bar. Okay. Now, advantage. Let's revise the advantage one more time. Multiple operating system can be accessed from a single machine. This is one of the advantage. Can offer a instruction line. Same architecture, you will get it as a real machine. Okay. This is a second advantage. It's easy maintenance. Single physical computer can run multiple operating system. This is advantage. Same energy consumption जो एक का consume हो रहा है same होगा. Okay. Quick access to the application, faster provisioning, and simplified data center management. No data center required or no physical hardware required again and again. This is the advantage. Clear? What is the Yes. disadvantage? What is the disadvantage? Less efficient than the real machine. थोड़ा सा lag you will feel it. That lag will come because of your hardware. Got it? Okay. Second, VM will chargeable. Up second. VM will be in the cloud. If it's on the cloud, you are taking the rented hardware. If it's still running, this can also be charged. Okay, because you have reserved the resources, so it will be charged. Second, consumption of CPU memory is very high and heavy in size. HEAV, heavy in size. That's why this approach got failed. Okay, cool. How to create it? We will do it in the tomorrow class. Not a big deal. Okay. Actual problem. The development will be very slow. Or our full SDLC becomes slow. भाई movement ही नहीं हो रहा है application का. Correct. Correct. Right? Then full SDLC will be slow. Transportation is slow. Okay. Heavy machines. Every developer need a heavy machine. उसको चलाने के लिए सबको heavy machine देनी पड़ेगी. Correct. Dev, QA, IT support, operation. Everyone required a heavy machine. And this is not possible. Money will come into the picture. So this approach becomes big. Cool. Now, because such में we need a lot of machine. Yes, in the real time, we need a static website, web front, background workers, database users, analytics, queues. So many things are there. So in the real time, we may require so many different virtual machines for single application. Agree? Yes, no? Yes, sir. Yes, Yes, agree. sir. Right? We need a multiple machines. एक machine की बात होगी तो ठीक है बना लेंगे, manage कर लेंगे. Okay? But if we need 10 machines of 10 GB, तो ये तो problem होगी भाई. It's not feasible. Okay? So this approach failed. और उसके बाद यहाँ तो बना दी, उसके बाद we have to take it to the dev, we have to take it to the QA, we have to take it to single server, we have to take it in another server, client machine, prod, pre-prod, prod, gone case. Correct? Yes, no? Guys, are you agree? Everyone? Yes. Yes, sir. Agree. Yes, sir. Okay. So I can say the virtual machine approach failed 5 years back. And yes, now
अभी हम लोग क्या करते हैं? Okay, when we have to move. चलो, I will take a simple example. In the COVID time, how many people has moved from one city to another city? कितने लोगों ने सिटी चेंज करी थी, या रूम चेंज करा था, हॉस्टल चेंज करा? सिटी। अनिरुद्ध सर एग्जांपल, मेरा तो अनिरुद्ध फ्रॉम वर्क विच फ्रॉम सिटी? होम था। चलो गुड, यू आर लकी पर्सन मैन। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? किसने किसने सिटी चेंज करी थी, या किसी ने हॉस्टल में पीजी चेंज करा था? मैंने करी थी। हाँ चलो गाइस, गिव मी एग्जांपल, क्या करा था, कैसे करा था, बोलो। मालूम था कि लॉकडाउन लग गया, कोविड था, फ्लाइट का टिकट लिया, मूव कर गया। नहीं, अरे अच्छे से बोलो यार, थोड़ा कौन सी सिटी से क्या था ये बताओ, थोड़ा समझाओ। मैं बैंगलोर में था और बैंगलोर में थे, करेक्ट। और वो लॉकडाउन अनाउंस होने वाला था, एक दिन बचा हुआ था, तो अरे हाँ, तो कौन सी सिटी गए थे? मुझे तो सिटी का नाम चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए पटना क्यों हुआ पटना था, सिटी का नाम। पटना 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 आया था वापस। नहीं पटना समझा, व्हाट, विच सिटी? पटना पटना Patna. पटना इज द सिटी। बिहार पटना। पटना बिहार इंडिया। बिहार 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 पटना बिहार। सर, पटना। चलो, बिहार। ओके, चलो, ही हैज टू फ्रॉम बैंगलोर टू, ही हैज टू वांट टू गो बिहार। ठीक है, घर में सामान था, नहीं राइट? मैं छोड़ के आया था जूता से, बैग लेके आया था नॉर्मल। अरे भाई, मैं तो पूरा सामान लेके तुम्हें घर भेजूंगा, ठीक है? ये वाला कैसे गए थे पूरा सामान लेके? ठीक है। भाई बोलो, नहीं तो कोई और को बोलो। नम्रता, कमल, तुषार, अनिरुद्ध, बोलो। यस, यू हैव टू गो फ्रॉम बैंगलोर टू बिहार विथ योर ऑल आइटम्स। हाउ यू ठीक विल है। गो? We pack our luggage. हाँ ठीक है। We go permanently home. हाँ चलो ठीक। अब सी, देयर आर टू ऑप्शन। सी, बैंगलोर टू बैंगलोर अगर सिटी टू सिटी ट्रांसफर करना है, व्हाट आइडियली वी डू, एक ऑटो लेते हैं, या एक छोटा सा समथिंग। ओके, सब सामान रखा, व्हेन वी आर बैचलर, पुट एवरीथिंग इनटू द ऑटो, चलो भाई, एक पीजी से दूसरे पीजी। करेक्ट, यस, नो? Yes, yes. ठीक है, वन पीजी टू वन पीजी, चलो पॉसिबल है। ठीक है, वन सिटी टू सिटी ऐसा कर सकते हैं कि ऑटो लेके चले गए सब सामान भर के? नहीं No. नो, पॉसिबल। राइट? You have to इट्स put in नॉट a पॉसिबल। truck, कंटेनर के अंदर बेसिकली। शिवा देन यू हैव टू पैक भाई की, ऑफिस का आइटम ऑफिस बॉक्स, किचन आइटम किचन बॉक्स, बेडरूम आइटम बेडरूम बॉक्स, वॉशरूम आइटम वॉशरूम बॉक्स, राइट? सम सेपरेट सेपरेट बॉक्स यू विल क्रिएट इट, सो दैट जो सामान है वो पूरा का पूरा पहुंचेगा। एग्री, यस, नो? Yes. यस सर Right, Yes, sir. damages will happen less. Okay, so the idea or approach is like we have to create a container, so we have to create a boxes, and then we will move with the help of boxes. Agree? Right, this is the यस ideal Agree. approach. Okay? When we move from one city to another city, yes, the container, or from country to country is also possible with the help of big containers. उसके अंदर छोटे छोटे containers होते हैं, पैक कर दो, लॉक कर दो, secure, you can put your lock and you will make it secure. राइट, पता है नम्रता यहाँ वन से वन प्लेस टू अनदर प्लेस गई, उसके भी दो बॉक्स गायब हो गए। पॉसिबल, राइट? होता है, एग्री? Agree, sir. Agree. राइट, पता चले तुम, सी अनदर एग्जांपल, यू आर मूविंग योर फुल एप्लीकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्टैटिक वेबसाइट, और बीच में यूजर डेटा गायब हो गया, तो क्या करोगे? एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग, देन इज अ प्रॉब्लम। Yes, you are able to imagine the problems, right? If you miss something, analytics database is missing, then your application will not work. Okay, so we need everything properly, securely, and packed properly, and so that one another. See, let's take an example. Sorry, Namrata. Okay, Namrata is in Bangalore. Okay, Namrata is still in Bangalore. Okay, and she sent his all item to the Patna. Okay, but Namrata is still here. Namrata ने पूरा बॉक्स सब बना के भेज दिए। Here Patna means Namrata is a developer. Imagine, और ये प्रोडक्शन टीम है। प्रोडक्शन टीम को समझ में ही नहीं आ रहा क्या आ गया। This is again a problem, correct? Yes. Yes, no? यस Right? यस If you send it like, if you send it like this, उनको असेंबल करने में वो सब कुछ असेंबल उल्टा सीधा असेंबल करेंगे, और वो बोलेंगे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, all lot of problems. Agree? At least you will यस सर pack it properly. Yes, sir. At least if you will pack it properly, पैकिंग के ऊपर टैगिंग करोगे properly कि भैया ये हॉल का आइटम है, हॉल में रख। Okay, this is bedroom item, तो put it into bedroom. थोड़ा सा proper tagging वेगिंग, तो it will be easy कि भैया पटना गया सामान, सामान का उन्होंने कम से कम proper rooms में तो सामान रख दिया है, right? Then you will do a video call and उसको open करवा के arrange करवा दो। Possible है। अगर if the item will go like this, it is not possible to arrange also, right? यस Guys Yes, agree? yes, To the, yes. what the correct approach is?
The approach is like put the containers, put the proper tagging, and then move from one city to another city. It is possible. Okay. Okay. Now it depends on your size. If you have a lot of item, take a big truck. Small item, small truck. जैसा भी move होना है वैसे move हो गए. Correct. Cool. And this can be possible with the help of containerization approach. The container is a standard unit of software that pack your code, dependency, application, everything, whatever is required to run any of the application. Yes, we have to move it. We have to do it. Okay? Which can be very quickly, very reliable from one environment to another environment. If you pack it properly, like I will take an example. ये मोबाइल फोन है ओके आई परचेस फ्रॉम फ्लिपकार्ट अगर ये फ्लिपकार्ट से वो ओपन करके दे देगा कि सर दिस इज अ स्पीकर दिस इज अ स्क्रीन दिस इज अ कीबोर्ड दिस इज बैटरी दिस इज 20 सेंसर्स पुट इट एंड असेंबल बाय ओन चलेगा ये फोन बोलो इफ द यूजर हैज टू असेंबल बाय ओन अगर उसको खुद असेंबल करना होगा यूजर को नहीं होगा राइट नहीं होगा तो सेम थिंग अगर डेवलपर गिव द फुल एप्लीकेशन फुली कि भैया जाके असेंबल करो प्रोडक्शन में तो इट विल नॉट वर्क एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल हैपन right so what is the solution pack it properly so that it will be working in dev environment same thing it will work into the production environment as well that can be possible with the help of containerization approach guys you are getting an idea क्यों को पैक कर रहे हैं भाई मोबाइल क्यों पैक होके आता है if 20 sensors are there अगर 20 सेंसर तो इट विल बी बिग प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा कोई भी असेंबल नहीं कर पाएगा कितना एक्सपर्ट होगा वो भी नहीं कर पाएगा करेक्ट आई कैन से कि अगर तुम अपना फोन खुद ओपन करोगे ना और खुद बंद करोगे तो इट विल नॉट वर्क एग्री यस नो Yes, sir. Right possibilities are there okay so yes so the containerization approach that's why the containerization approach becomes successful okay and chalo बहुत हो गया मस्ती now welcome to docker okay because container came with the help of docker we can build ship and run any application anywhere कोई सी भी एप्लीकेशन को कहीं पे भी रन कर सकते हैं with the help of docker docker is one of the open source application for developers and system admin not for production engineer को तो सिर्फ रन करना है okay everything building shipping packing everything will happen in the dev or devops environment itself got it ऑपरेशन वालों को कुछ नहीं करना है ऑपरेशन का तो सिर्फ रन करना है ओनली दे हैव टू रन इट इट विल बी वेरी इजी right and if the application is running into dev environment definitely it will run into the prod environment as well okay चलो anyone take the real time example कोई real time example देगा इस चीज का Java based application या कुछ anything yes go ahead अच्छा चलो I will give a scenario किस किस का Jenkins अभी तक नहीं चला local machine में anyone whose Jenkins is not at all running in local machine कोई है anyone किसका नहीं चला अरे यार कोई तो एक तो बोलो कोई तो एक बनो आतिफ अनिरुद्ध नम्रता तुषार मैंने अभी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस ही नहीं की नम्रता ने बहुत बढ़िया व्हाट अबाउट अदर्स चल गया सर मैंने एनीवन कोई बोल रहा है सर मेरा जेंकिन हाँ मेरा चला है लेकिन मेरा नहीं चला ऐसे मान लो सर चलो अज्यूम कर लो वो देखो डिफेंस खेल रहा है ठीक है मेरा चला है तो मान लो नहीं चला ठीक है डिफेंस नहीं कर शायद नहीं चला चलो now what I will do it let assume that Jenkins को रन करना है okay but Jenkins की has a dependency क्या है Java correct Java 17 और 21 is a dependency right और Jenkins के बाद Java first is Java फिर configuration होती है config होती है port 80 को खाली करना पड़ता है if the port 80 is not open or not empty if you are running some other application it will not work correct yes no okay so these are the some dependency अब उसके बाद हम लोग फिर Jenkins की एप्लीकेशन लेंगे Jenkins की प्योर एप्लीकेशन उसकी बाइनरी लाइब्रेरी प्लगइन्स okay so these all things are there if you miss any of the step it will not work let's assume you have everything you have full Jenkins application okay you have the full only Jenkins application and you want to take it you give it to earlier हम लोग क्या करते थे Jenkins की एप्लीकेशन रन करनी है ले भाई Jenkins चला दे करेक्ट यही करते थे right but the problem कहाँ आती थी this person has a Java 40 और उसका पोर्ट भी ओपन नहीं है 80808 ऑलरेडी यूज्ड तो क्या होगा वो एप्लीकेशन Jenkins चलेगा is the Jenkins will work in his environment no sir it will not work right No, sir. so where he will blame on the Jenkins not as in environment correct
Agree? Yes, Blame sir. कहाँ आएगा? Jenkins पे आएगा. Not on Java 14, no, not Pod 80. He will say Jenkins is not working. Because of that, lot of fights are happening. So the solution came. भाई सबको Java 21 चाहिए, pack Java. Configuration, whatever is configuration, 80 यहीं से open कर दो. Okay? Jenkins software, binary, library, plugins, dependency, everything. Put it into one box and then give this box to other team. अब कैसे नहीं चलेगा बताओ? सब जगह चलेगा. Agree? Make sense? Yes. Everyone agree? Yes, no? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, So what is yes, the yes. Yes, solution? sir. Pack it as an image. Pack it as an image, it will work. Definitely it will work. Okay. And we are going to do the same thing. We are building, shipping, and putting the application and then directly run it into any of the environment, it will work. It's very simple. Okay. Now, mm, it's simple like this. Okay. सिर्फ एक command run किया हो जाएगा. Okay. And I would like to give a small break here. एक small break लेते हैं. And then we will move into the Docker installation. If you are with mobile phone or whatever it is, we'll come up with a laptop and we have to do the practicals. Okay, at least पूरा system setup कर लेते हैं today. Then from tomorrow onwards, we will be into the full-fledged practicals into the Docker. Got it? Yes, sir. Okay. Some people are asking the question. कल group में question आया था. कल class रखनी है या नहीं? Tell me. No. No. हाँ है. No, No. sir. No. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Holiday, sir. चलो मैं एक poll डाल रहा हूँ. Okay. Do we have to keep the CLA class on date क्या है 27. 7. यार देखो एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ. ओके, वोट करने से पहले ये सोच लेना. मॉर्निंग इज ए वेरी लेस थिंग बट इवनिंग विल बी मोर फॉर रोमिंग पर्पस. करेक्ट? तो थिंक इट. हमारी मॉर्निंग और इवनिंग बोथ कैन बी कैंसल. गॉट माय पॉइंट? No. No, sir. सर तो पुणे में मॉर्निंग रख I लेते हैं. कीप द मॉर्निंग, इवनिंग को कैंसिल कर लेते हैं. व्हाट यू से? नहीं सर, इधर दिन भर रहता पुणे में सर. हाँ. Yes, sir. It is a big It is festival early here. morning. इधर भगवान जी बहुत जोर से आते हैं तो इधर, मॉर्निंग इवनिंग दिन भर दोनों आते हैं. हटाना है. मॉर्निंग इवनिंग दोनों Yes, sir. फुल डे. Yes, Yeah, yes. full day. Full day. चलो It फिर can. कोई की जरूरत नहीं है तो सभी मना कर रहे हैं तो ठीक है चलो. ओके, आई Sir, वाज थिंकिंग कि मॉर्निंग को. हाँ कोई लिख रहा है नो sir, नीड ऑफ होल वी डोंट वांट पूजा करना है. वो नहीं आंसर छोड़ो मुझे अब बहुत अच्छा देखो. लगा. सर, विकास हाँ, सर. कर एक दीजिए लेवल तो छुट्टी. क्लियर बोल. एक लेवल क्लियर सर, बोल से बोल की जरूरत ही नहीं है. विकास चलो सर, ठीक है मुझे ऑल एक आंसर बहुत एंजॉय अच्छा लगा. एंजॉय. अरे एंजॉय यार, एंजॉय एंजॉय एंजॉय. ठीक सब है चल. सब लोग क्या गणपति के करना है? बहुत बड़े भक्त हैं इधर. ठीक है ठीक है. आई नो. Noise. ओके. अरे Noise is यार देखो pretty much पैकेज चाहिए आई एग्री बट फेस्टिवल भी तो एंजॉय करना है. यस नो? Yes, sir. सब पैकेज तो अभी Yes, जाएगा sir. बट फेस्टिवल भी तो चाहिए. राइट? पैकेज चाहिए तो फेस्टिवल होगा तभी तो पैकेज चलेगा. तो एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स. ओके, व्हाटएवर इज कमिंग. लेट्स टेक ए क्लॉक. एक छोटा सा ब्रेक तो लो, अभी जाओ पानी वानी पी के आओ. ओके. सर, टेल मी सर 3 minutes. वो आंसर किसने दिया सर? हमारे इधर भगवान जी बहुत जोर से आते हैं. Prithvi. ज्यादा नो मोर Prithvi. डिस्कशन. ओके, Prithvi. 4 minute ब्रेक. अभी तो जाओ ब्रेक करना. ओके, क्योंकि डिस्कशन नेवर फिनिश. ओके प्लीज. And I will make the things very simple like this. Okay, cool.
Guys, I'm back. Any question in between? Go ahead, please. No questions. All good? Yes. Cool. And guys, time is up. Welcome back, please. Please, back. Okay, cool. Now we are moving into the Docker side. Okay, cool. So there, someone is also watching. Grandmother, grandmother She's is my also learning Docker. she's my grandmother, and she asking me what you have to learning. I would like to say. So Yeah, good. Nice. Chalo, cool. Okay. Welcome to the Docker session. Guys, now before going into the Docker, I would like to take very simple basic definition. Okay. What do you mean by node? Go ahead. Guys, what do you mean by node? A virtual Tell me. instance where we will run the Docker related components. Correct. Area of the virtual machine where software has been installed that is called node. Good. What is image? Image. Packed version of binaries. Pre-built template. I'm Packed pre-built version template. of Okay. application and its dependencies from which we can make a container. Packed version of binary and applications into the single box is known as image. चलो, ठीक है. What is container then? Running instance of an Docker image. Running Not image. container. Is known as container. Okay. So on the node, we will install means virtual. We will take the virtual machine. After the virtual machine, we will install the software. It will become node. कौन सा software? Docker. Okay. And after the Docker, we will develop the image. We will pull the image and we will run it, and the container will get created. Got it? Okay. Yes. Cool. Now, again, repeated question. Some people will say, "Sir, repeat kar rahe ho." No worries. What is Docker? Docker is an application. Docker is a tool who designed to create, deploy, and run the application very easily with the containerization approach that is called Docker. Docker can help in building, shipping, and running any software anywhere. It is called Docker. Okay. Docker allows a developer to pack the application and its all requirement, binary, library, dependency, everything in one box. That is possible with the help of Docker. Means packaging of application is possible with the help of Docker. Okay. Uh, Docker ensure Docker ensure that whatever is required to run any application from one environment to another with its binary dependencies and everything. Docker ensure everything has to be packed into one box, and that is called image. If we run the image, it will become a running application. That can be possible with the help of Docker. Got it? Got it. Yes, got it. Okay. Now I will not take the definition of Docker. Otherwise, some people will say, "Sir, repeat हो गया, बहुत हो गया." You can read it. Okay. If you want to read another variety of definition, I have a lot of variety of definition. Okay. You can read it. Okay. Cool. Now let's start with the Docker. Okay. Again, two varieties of approach I have. Okay. One is local machine. No. We will only do into the cloud. We will do only into the cloud. Okay. So guys, everyone create a machine. Come on. Create a machine. Any machine, AWS, GCP, Azure, anywhere. Okay. Anywhere. Okay. मैं क्रिएट करूं सर Now, स्क्रीन शेयर करके हाँ, what are you telling? मैं स्क्रीन शेयर करके कर दूं क्रिएट सर नहीं, तुम अपनी स्क्रीन में शेयर करो. Anything is fine. Okay. Anywhere, any machine is fine. But first take the Ubuntu machine. It will be simple because I will give the Ubuntu, what we can say, Ubuntu commands, or CentOS is also fine. Okay. But I need a machine. Okay. Compute engine, virtual machine. Okay. And I don't have any machine. I click on create instance. Okay. And yes, Docker. Okay. I'm giving a name Docker. Okay. Whatever the name you want to give, you can give it. Operating system. I'm changing the operating system to Ubuntu UBUNTU. Okay. And I'm taking the version 24.4 LTS version. Yes. AMD ARM 86. Okay. 24
8664 ARM 64 I have taken. Okay, I am taking this time around little bit bigger 25 GB. Okay, because we want to do some experiment. We have a half an hour. We will do the experiments. Okay, select networking, allow the traffic. I am repeating from the starting. Okay, take any of the machine, any of the name, whatever you want. Operating system as Ubuntu free because it is free. I am taking a 25 GB. After that, I come to the networking. I allow the traffic and I click on create. Now, if you feel this is kits, you can click on equivalent code. Now, click on equivalent code. The command will be generated in front of you. The CLI approach, the command has been generated for this machine. Okay, you can copy this, and if you have a time or if you have a strong heart, okay, so you can read that command also. Okay, otherwise not mandatory. You can try to read it. This is the command to create a virtual machine. Okay, now this is the name of the machine. This is the name of the machine. This is my project name. Okay, this is the project name where I'm creating a machine. This is the size of machine. This is the size of my machine. Okay, it is mentioned here. And after that, somewhere I put the 25 GB. तो यहाँ पे कहीं Control F 25. कहाँ दिख रहा है? Yeah, here the size of the machine is 25 GB. Okay, yes, whatever the information I choose, yes, it is visible here, and I can copy this command and I can run from any of the place where the this add GCP access is available. Okay, I can run from any of the place. Okay, but authentication should be correct. If you don't have authentication, no worries. Google Cloud is giving you one of the place. I'm going into Google Cloud. Google Cloud is telling I'm giving you the Cloud Shell. What do you mean by Cloud Shell? Anyone? It is command line interface. थोड़ा और अच्छा आंसर. I need a better answer. Yeah, correct. Okay, but I need a better answer. Mm-hmm. Built-in cloud shell provided by Google. Basically, time is provided by the specific clouds. Like each cloud is having the cloud shells. Yes. Anyone? Any other answer? See, there are two types of interfaces are available. One interface, ये वाला UI वाला. You can perform the activity on UI और वो Google Cloud के data center पे जाके execute हो जाएगी. Correct? It will get executed on the UI from the UI. One approach. Second, this is a command. भाई ये command तुम्हारे notepad में लिखा है, right? It is written in your notepad. Correct? अब ये command को where you will execute? You need an interface between the data center and between the data center और क्या बोलेंगे? Between the data center and your machine, okay, or somewhere to somewhere this has been connected. So this is a place, if you will execute it, it will get executed with the help of CLI into the data center of Google Cloud. Okay, so yes, you can say a terminal provided by Google Cloud. Yes, this is a terminal provided by the Google Cloud where you can run the commands, and in this terminal AI is also enabled. You don't have to worry. Whatever, see, I have not written any command, right? ये तो auto generated है, correct, with the help of templates. Agree? Yes, AI will also come into the picture. Templates will be ready-made available for you. Everything is pasted also automatically, because if I open it, he knows that he will paste this command, so he pasted and pressing the enter. As soon as I press enter, my machine will be get created with the CLI approach on the Google Cloud. Got it? Yes, So sir. what you can do, if you want to keep this command, you can keep this command. अब उसको automate कर दो shell script से या whatever you want. Agree? Yes, no? So multiple approaches are there. Either you can do from the UI. Our Terraform will also come in the picture in some couple of days. So we will do with the help of Terraform, but this is called CLI approach, command line interface approach. You can run this CLI from your local machine also. Chalo, guys, 2 minutes. I will spend 1 minute time on the Google Cloud also. Now I have an interview question. You have this command. Okay. Guys who know the answer, wait for 30 seconds at least. Okay. If you know the answer, wait for 30 seconds. You have a bo above command, you have above command, okay, and you want to run in your local terminal. लोकल टर्मिनल कुछ नहीं होता, CMD होता है ओके. लोकल टर्मिनल में CMD, ये रहा सर कमांड प्रॉम्प्ट CMD माय लोकल मशीन कमांड प्रॉम्प्ट, मुझे यहाँ रन करना है.
Now the question is, कॉपी पेस्ट तो कर दूंगा मैं, इंटरवल में चलेगा कि नहीं चलेगा? टेल मी, यस नो, इट विल वर्क और नॉट? Yeah. एवरीवन Your machine, it लिखो will चैट work. में, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे अन्य चैट पे लिखो, चैट पे लिखो, इट विल वर्क और नॉट? नो लिखो सर, एवरीवन, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यार? राइट इट, राइट इट, राइट इट, राइट इट, राइट इट। बोला इन योर मशीन इट विल वर्क, आपकी तुम्हारी मशीन में नहीं चलेगा। ओके गाइस, यस और नो लिखना है यार, यस और नो। इट विल नॉट वर्क। चलो, whoever is telling no, क्यों नहीं चलेगा ये बताओ? कमांड है चलाने के लिए, टर्मिनल है चलाने के लिए। शेल नहीं है, उसका एनवायरनमेंट नहीं है। Haramis, go ahead, give me the answer. If you know the answer very well, go ahead. Okay, the command started with gcloud, right? So firstly, we have to install the Google Cloud CLI. ठीक है, good answer. Correct. Okay. You have to configure something and then it will work. Command तो सही है, command will work from anywhere, but you have to configure it. Okay, so the answer is yes, it will work, but we need a condition apply. We have to create a configuration. Okay, what is the configuration? चलो, I will delete this. Okay, बोलो क्या configuration? Anyone knows? GCLOUD, मैंने मेरी मशीन में चलाया G Cloud, ठीक है, G Cloud तो नहीं है तो it will correct. So we have to configure it. I will take some other day, okay, or I will teach you the G Cloud installation or configuration, and then all the commands will work. Got it? Fine. Okay. I don't have at this point. I will teach you any of the day because this is not a Google Cloud discussion. Docker. So I am coming here, and what I can say, yes, I have executed this command, and perfect. I get output that my machine is created. Guys, explain me what is happening here. क्या हुआ? What is the output? Output. It created a VM instance of named Docker. Docker VM has been created So into this location. machine type, This is the size. an This is the IP, internal public and private IP, IP assigned or status run. and it is telling that it is running. Perfect. Let's verify. Close this. हो गया इसका काम. Okay. And I'm going back. And perfect. My machine is created with the CLI image. Got it? Now I Yes, can sir. rerun. If you have a command, ये command है. Okay. Now I'm coming here. I can open the CLI from here. Here a button. Okay, you can open the CLI here. Paste the command. हो गया. Got it? Yes, no. Perfect. Paste the command here. It will work. Okay. Good. चलो. अभी Docker में चलते हैं. Okay. I am clicking on SSH. I am connecting to the machine. Okay. Yep, I have connected to the machine. Okay. I am running the command sudo -i. I become the root user. Sudo -i. S was capital. That was my mistake. Okay. Now I become a root user. Okay. Now, can I get your help? How to install the Docker? Go ahead. Help me out. So we'll first update I need the a command. system. Update the You have apt to update. update first. Command. apt update. apt update. apt-get update. apt-get update. Okay. This is the proper command. चलो, I'm updating why we are doing this? क्यों कर रहे हैं ये? What is the reason? We'll update all the packages and Why? What is it? Why? Why? To update, Interviewer asks why. to update the latest packages and dependencies available. वो तो ठीक है. That is a command. But why? क्यों run कर? Sir, if we don't update it, we might not get we might get the error as Docker is not found, or maybe it's not available. You will not understand. There may be chances you will be on the old version, or there may be chances
There may be chances. This is not a best practice. Simple. Okay, you have to update. This is the best practice in every production environment. Before, if we are doing any installation or anything, then we have to update the packages. Okay, all the dependencies should be updated. Then only we have to install the software. Cool. Okay. Now I'm just typing Docker. DOCK. I don't know the command. I'm just typing Docker, and perfect. He's telling Docker is not found. Okay. When I type this G-Cloud in the Google, it is telling in the my terminal G-Cloud not found. Okay, but in the Linux, you can see that Docker not found, but he given some command to me. Right? You can use this command in Docker version 26.1 or whatever the version has been get installed. So I get a command automatically. I pasted that command apt install docker.io, press enter, and what happened? 300 MB software of Docker will be get installed in my machine while and enter. Okay. So guys, what I run this command, I just run this two command apt update. उससे पहले sudo लगाया था sudo -i. Okay. So these are the three command I executed and run the command dock docker -ver sion and explain docker docker -ver sion. My Docker version 27.5 has been installed in my machine and I'm giving three command, run it and give me the screenshot. Okay, I'm giving only 30-second time. Fast, copy paste करना है TLOCK. So 30 seconds I'm giving 1 minute time and I want Docker to be installed in your machine. Fast, 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 fast. I'm opening my WhatsApp also. I need a screenshot in WhatsApp. Perfect. Very good. Bridge. Ashish. एक ने संडे को क्लास रखने बोला एक ने मुझे नहीं रखी. Good. Okay, guys, I will wait for 30 seconds. Fast, 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 fast. Yes, perfect. Cool. 25, 24. Perfect. Very good. Very good. Very good. Yeah, nice, nice, nice. Yes. Yeah, this person is installing on I think Windows in the AWS. Okay, cool. Perfect. Yes. Someone connected with Putty. क्या फर्क पड़ता है? Right? Yes, no. Agree? Someone connected with Putty. Someone connected with terminal. Okay. ये देखो someone using in the Mac operating system with the terminal. भाई ये मशीन में इंस्टॉल है कहाँ पे इंस्टॉल है कि लोकल मशीन में इंस्टॉल नहीं मशीन है ओके गूगल क्लाउड रमेश मशीन बट इट्स अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यस ही कनेक्टेड विद द टर्मिनल ठीक है चलेगा एनीथिंग इज फाइन गाइस एनीथिंग इज फाइन ओके माय इंटेंशन इज आई नीड अ डॉकर ओके परफेक्ट डॉकर वर्जन कुछ तो एरर आया है दोस्त डॉकर वर्जन डी कैपिटल हो गया है हे प्लीज सी दिस ये इनकम्प्लीट है हुआ सिद्धार्थ सिद्धार्थ क्या कर रहे हो सर वही मैं एक्चुअली वही शेयर कर रहा था कि मतलब एरर क्यों आया वो तो स्पेलिंग का मैंने मिस्टेक कर दिया वो ध्यान नहीं दिया एरर क्या है चलो एरर क्या है बताओ एरर मिल गया सर मुझे Docker install. एरर बताओ D is capital. Capital D. इंस्टॉल कहाँ करा इस बंदे ने हैव यू इंस्टॉल्ड कि सिर्फ sudo -i और docker सिद्धार्थ बोल बस रहा है इंस्टॉल हो चुका वर्जन था चेक एक्चुअली किया दोबारा से चेक किया था वर्जन में मैं एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया अदरवाइज हो चुका है चलो ठीक ओके गाइस रन ऑल द 4 कमांड्स ओके एक कमांड बीच में मिस मत करना प्लीज डोंट मिस इट ओके आई फील लाइक इन दिस स्क्रीनशॉट sudo -i और डायरेक्ट docker वर्जन चेक कर लिया ओके docker इंस्टॉल करोगे देन ओनली यू विल चेक इट ओके कूल थैंक यू कूल ओके perfect okay perfect it is working perfect yeah perfect good thank you okay yes docker is up and running 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yes 21 people has did it very good okay thank you so now I'm going more deeper into it अब docker तो install हो गया now let me explain you the architecture of docker okay अब छोटी थ्योरी वेरी मिस करते हैं लेट एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर ओके सब मिस कर रहा हूँ स्किपिंग कल करेंगे ओके नाउ see this image ये थोड़ा टफ हो जाएगा अभी see this image how many people are able to understand this image कितने लोगों को इमेज समझ में आ रही है tell me
Me, Ravi Surabhi. Okay, what about others? Me, 100%. बहुत बढ़िया. Guys, everyone, percentage, please. अनिरुद्ध जानबूझ के जीरो लिख रहे हो कि सच में जीरो है? नहीं सच में सच में नहीं यार. Hey, you are applying for the job. ऐसे कैसे जीरो होगा? जीरो तो नहीं होगा यार. at Docker whose part I'm not able to understand. Okay, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. That's good. Okay, but I'm going to talk for you with the HR for the Saudi location. ठीक है, तो वो requirement है, ये सब चाहिए. हाँ I'll prepare that. चलो cool. Okay, चलो. Now I'm dividing this image into three parts. Okay, 1, 2 and 3. Okay, this is client, your local machine terminal जहाँ पे command चलाओगे. Okay, second, where the Docker is installed, where the Docker background process is running. Third place, Docker Hub, where the 20 lakh images are available. Okay, so this is divided into three parts. So let's run the practical and then you will understand automatically. Okay. What I'm doing it, I'm running the very first command. कहाँ गया? नहीं, pull नहीं करेंगे, हम तो run करेंगे. Yeah, okay. I'm directly running one command. Okay, docker run. Okay, guys, everything I'm giving into my PPT. Okay, you don't have to worry from where I'm running. Docker run hello hyphen world. Don't do the mistake. Okay, hello hello hyphen WRLD. Now the question will come, Vikas sir, ये hello world कहाँ से मिला? Okay, if you don't know, Google. We have a Google. Okay, hello hyphen WRLD world image on इमेज भी लिखोगे तो भी आएगा, डॉकर हब भी लेके जाएगा. ओके, हेलो वर्ल्ड इमेज, हियर इज डॉकर हब. ओके, एंड फ्रॉम हियर आई टुक वन कमांड. ओके, आई जस्ट कॉपी पेस्ट, मैंने कुछ नया नहीं करा है. ओके, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग दिस कमांड. ओके, since I'm not writing from my side, I'm taking this and docker run hello world. उसके बाद Linux भी है, तो I just remove the Linux, मुझे नहीं चाहिए. I just run this command. Guys, see my screen. I'm just making the full screen. Okay, and I'm running my first container. Sir, first container run हो जाएगा? Yes. Docker run type करूंगा. Run means to pull the image. Run का मतलब होता है pull the image, pull image and create container. सिर्फ with the help of run command, with the help of run, image will pull and container will be get created. Okay, you can see the magic. Okay, docker run hello hyphen WRLD. Please, you can run this command. Docker run hello world. Okay, but see my screen. Okay, I'm pressing enter. See my screen. As soon as I press enter, he is telling that कहाँ गया? He is telling इतना सारा आ गया क्या? Yes, Docker run hello world, unable to find the image. Means he is not able to find the image in my this machine. Correct? So what he's doing? Hello world, latest locally. He is not able to find this image locally. So he went to the Docker hub. He went to the Docker hub or image has been pulled. Image copy हो गई. Okay. Now hello from Docker, output भी आ गया. Okay. And what all things happen? The Docker client connected to the Docker demo. चलो, now see this image. अब ये देखिए. Docker client, this is a client. Okay. Docker client, I run the run command. Docker client connected to the Docker demo. Correct? ये लिखा है. Docker client connected to the Docker demo. Line number 1. Second point, Docker daemon pull the hello world image from the Docker hub. Docker daemon went to the Docker hub and pull the image. Sorry, my mistake कुछ गलत हो गया. Let me repeat it again. Okay. First command, first thing, Docker run and Docker client connected to the Docker daemon. Docker client, this is client connected to the Docker daemon. Why? Okay. Second, Docker daemon pull the hello world image from the Docker hub. Docker daemon reach to the Docker hub, pull the image from the Docker hub. This is my second line. Got it? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Okay. Docker daemon created a new container from the image which कुछ incomplete क्यों आ रहा है? अच्छा है ठीक है. Docker daemon created a new container from the image which runs an executive output. छोड़ो इतना छोड़ो. Docker daemon created a new container from the image. Docker daemon ने whatever the image you pull, Docker daemon again created a container. यहाँ पे थर्ड स्टेप में कंटेनर बन गया. ओके, द कंटेनर इज क्रिएटेड एंड इन द फोर्थ. तो भाई यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ना, ये तो पढ़ ही रहे हम लोग. कंटेनर में यही तो लिखा है. This is the fourth point, okay, which you are reading into the terminal. Fourth point is Docker daemon stream that output to the Docker client. Docker daemon ने output दे दिया terminal पे. ये हम लोग ने read किया. This is the flow of the Docker. हो गया. Because of only this command, run command. Guys, understood? Everyone 100%? Everyone 100%? 100%. Yes, Yes, sir. Yes. 100%. Everyone. Everyone. Yes, sir. Perfect. बस यही तो चाहिए था. This is the Docker architecture. ठीक है? We will discuss more. But yeah, this is the flow of Docker architecture. Okay, cool. So we run the very first command. Anyone, any question? Now, what is that Docker daemon? It is some kind of client which interacts between. I was thinking, yes, this question should come. Yes, what is Docker daemon? Chalo guys, who will give the answer? It's a background process with the Correct. Background process of Docker. Background process of Docker. भाई Docker की सर्विस. This is a Docker जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो भी तो कुछ करेगा ना. This is a Docker software, right? Where it is running as a service. Systemctl status Docker. If it's running, this all things will happen. When Docker daemon is running. Correct? So now my first container is created. Okay. Second, अभी थोड़ा सा आजकल छुट्टी है. Tomorrow is a leave, so I'm taking a little bit tough example. Okay. Monday go again. No, Monday the next class we will take again a simple example, but I'm taking a little bit tough. Okay. Nginx. Okay. What is Nginx? Hold on. It is a The web web server. server. Web server. Web server. Open source, very popular web server for fresher. Reverse proxy, caching, load balancer, media streaming, and so many more options for experienced people. Got it? Nginx is one of the most popular open source webs. Agree. Okay. Yes. Okay. Which is one of the very good performance wise, stability wise, very good. One very good application. Okay. One very good web server. Okay. Now, last time I run the run command, Docker run. ठीक है. तो क्या हुआ था? Docker run से क्या होता है guys? Tell me. Pull the image लिखा भी and है. create the Yes, container. yeah. Hold the image, image, created the Pull container, and started the container. It's become a container. Pull and container creation, both the things happen. This time I'm running only docker pull. Okay, nginx. क्या होगा? बोल. Tell me what will It happen. will pull the base image from the Docker. It will just pull the बस. image. बस. It will only pull the image. Okay. Pull करेगा तो देखेंगे कैसे? How to see it? Docker images. Docker. Correct. Docker images. First, let me run the docker images command. अभी docker images run किया and I get to know only one image is available. Hello world, which is of 10.1 KB. भाई 10.1 KB is the size of the image. Very light. You got the point? जिसने काम कर दिया. He explained the architecture to 10.1 KB. Got it? जो अभी हम 10 GB की बात कर रहे हैं ना, hypervisor में 10 GB. Now it's a 10.1 KB only. He did the work. Means your application, if it's a small application, copy इधर से उधर करना है, move इधर से उधर करना है, it can be of 1 MB also. Possible? 10 MB की application can copy, move, or your work can be done. पूरी Yes, sir. मूवी दिखा देता है. नेटफ्लिक्स का जो वन कंटेनर होता है, इट विल बी ऑफ लेस देन 10 MB, वो तुम्हें पूरी मूवी दिखा देता है. गॉट इट? सर वो See, I स्टोरेज can कंप्रेस say, करता है क्या? अरे कुछ नहीं कर, कोई कंप्लेंट नहीं कर. सी माय एग्जांपल, हमारी क्लाउड डेवऑप्स सब की एप्लीकेशन है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन है, 73 MB. एप्लीकेशन का साइज 73 MB है. ओके, but every day I'm uploading a 2 GB of your recording video file into our application. Got it? Yes. भाई वो एप्लीकेशन के अंदर थोड़ी ना मैं कर रहा हूँ. The data is different. Data is available into different.
लेट एज्यूम अगर मेरी पूरी बैच की रिकॉर्डिंग देना है तो 14 जीबी, तुम 14 जीबी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे क्या अपने मोबाइल में? लैपटॉप में करोगे क्या? नहीं होगी ना गाइस, यस नो? नेटफ्लिक्स हैज थाउजेंड्स ऑफ No. मूवीज, नेटफ्लिक्स हैज थाउजेंड्स ऑफ मूवी, उसकी एप्लीकेशन का साइज कितना है? जस्ट 20 MB, 40 MB, करेक्ट, 50 MB, यस नो? Yes. Yes. Yes, sir. बट यू विल ऑल द मूवीज, तो उसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है दैट आई विल टीच टू यू. Just understand that this is the size and application is my work is done. Okay, my architecture I have explained with this. Now what I'm doing it, I'm pulling one image. Okay, Docker engine. Okay. Correct. Mohammed Arbi is giving the correct answer. Data is going to store somewhere else. Yes. Backend में. Okay. Yes. Correct. Okay. Now I'm writing the Docker pull nginx. क्या होगा? What will happen with this? First. Image will be We'll pulled. just pull the Docker. image from Nginx Docker image Hub. will be pulled. It will say, sir, image available नहीं है. Docker by default image was not available, so it is pulling from the nginx. We're pulling from the Docker Hub. Done. How to verify? Docker images. Docker And I get images. to know that 192 MB image is pulled. भाई पहले तो virtual machine में you understood the realization, right? Docker pull Ubuntu. Okay. Ubuntu. Enter. Okay. Okay. Ubuntu की image key. Okay. Let's see. Done. EIMAGES डन. जो हम लोग यहाँ पे जो मैंने होमवर्क दिया ना तुम्हें, दिस इज डन, करेक्ट इन डॉकर, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It says डन. यही होमवर्क भाई, यही होमवर्क है. ये जो इमेज है ना, सेम इमेज है. Ubuntu. Okay. In the virtual machine, it is showing 2.3 GB. ठीक है, 2.3 GB की जो शो कर रही है. ओके. अब कंपेयर करते हैं. VM के अंदर 2.3 GB है. ओके. और डॉकर के अंदर क्या साइज है? सेम उबंटू की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट उबंटू ओनली. 190. कितने MB है? How much MB? 72. 78. 78. 78.1. 8 MB. 78. परफेक्ट भाई. यू सी द डिफरेंस? दिखा? Yes, sir. इफ आई विल नॉट टीच द वर्चुअल मशीन, अगर मैं वर्चुअल मशीन का ओवरव्यू नहीं देता तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस? No. यस. नो. कभी बैलगाड़ी नहीं चलाओगे तो कैसे पता चलेगा बैलगाड़ी और कार में डिफरेंस है? करेक्ट? एग्री? यस नो? Yes. नहीं तो बैलगाड़ी भी चलानी चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सर चारों टायर तो दोनों में होते हैं, थैले में भी होते हैं. यस, देयर इज अ डिफरेंस. ओके. कूल. चलो सेंटोस भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? सेंटोस. ओके गाइस, कैन यू गो टू द वर्चुअल मशीन एंड टेल मी द साइज ऑफ सेंटोस? बोलो. आई एम गोइंग हियर इन द वर्चुअल बॉक्स. ठीक है, सेंटोस में चलते हैं. सर 301. हाँ, नंबर फेडोरा सेंटोस की है. सेंटोस, यस इट इज सेंटोस. ओके. हियर एंड सेंटोस 9 ले लेते हैं. 1.77 GB. सेंटोस 9. ओके. 1.77 GB का है. ठीक है. वर्सेस टेस्ट. नाउ आई विल नॉट डू इट, यू कैन डू इट एंड लेट मी नो द सेंटोस का साइज. आई डोंट वांट टू डू इट इन द डॉकर. क्या कमांड रन करोगे? थिंक इट एंड रन इट प्लीज. नहीं है तो गूगल, वी हैव अ गूगल चैट जीपीटी. गो एंड गूगल एंड चैट जीपीटी एंड गिव द आंसर. फर्स्ट. Fantastic. Guys, answer fast. Sudhir, answer. Anirudh, you are telling zero. तो हाँ, जीरो का आंसर तो दो. नहीं, मुझे कमांड नहीं चाहिए. I don't need a command. I need a size. नहीं, I don't need a size. I need a size with screenshot. मुझे तो screenshot चाहिए. Go ahead, everyone. So चलो, I'm Docker, waiting for the screenshot. हाँ, जो भी, whatever is the command. Run करो. Run. Command. 72 शिवा का आंसर आया. Okay, good. Guys, I need a screenshot. Docker images run करो, कम से कम 3 कमांड और स्क्रीनशॉट दो.
So at least you will say that yeah, you have downloaded 3 images today in the Docker. Chalo, let me do it in front of you. No problem. Are you Docker pull CENTOS enter? Oh, CentOS spelling is wrong. CentOS नहीं आता CentOS की spelling. चलो, we'll go to the Google. DOCK Docker pull CENTOS चलते हैं. CentOS official website. Okay, and then as soon as you will come here down, CentOS ka CentOS you have to give the number also. Yes, I am taking the number completely proper. I don't know the command. Simple. Assume that you don't know anything. Okay, Google is there, official website is there. Enter. Okay, now it is downloading. Got it? Take the help from the Google because we can't remember everything. Guys, agree? We can't remember everything. Okay. And now run the Docker images command. Okay. And yes, the CentOS size is 204 MB is coming here. I need this screenshot. Great. Chalo, let me see how many people are doing it. Perfect. Dheeraj, very good. Good. Birju, only one. ये CentOS ही करी चलो ठीक है. Okay, fine. Cool. Perfect, Anirudh. And up, you will not say zero, right? No. No. Guys, zero वाले person at least come to 50 or 100. Yes, no? Yes. Right? I don't remember किस किसने zero बोला था. अभी check करना पड़ेगा. Sam Khan, you are telling 10%. Tirupati, no idea. Tirupati, how much you are at this point? I need your screenshot. Tirupati, I need your screenshot because you are telling zero. Sam, 10%. Jodo, 20%. No one, I need your screenshot. Chetan, I need your screenshot. Gorish, Komal, जिन्होंने जीरो बोला था, I need उनके screenshot चाहिए मुझे. Gorish, repeating the name, no one. Sir, right Sudhir now I Bhatkar, don't have my laptop. ये तो बहुत ही अच्छा आंसर है भाई. इससे अच्छा आंसर तो कुछ भी No, नहीं sir, है. I will definitely share, sir, till tonight. ठीक है. ठीक है. शिवा डन, ठीक है. Okay, cool. सर Thank जो you, thank you. डॉकर इमेजेस करते हैं उसमें क्रिएटेड एक टाइम स्टैम्प आता है, सो दैट टाइम स्टैम्प इज कमिंग फ्रॉम लाइक हाउ इट जिसने इज. बनाया उसका टाइम आ रहा है. Whoever has created उसका टाइम आ रहा है. Whoever has created and push it, development time है ना. It is a development time. When we will develop our image, then our time will come. Got it? ओके. Got it? Yes, no? Yes, sir. यस. है ना. ये अभी see it has been created 12 days ago. तो 12 days का सही टाइम आ रहा है. We just बट downloaded. We have not. हाँ. बट एनजेक्स ने उन्होंने खुद ने बना के, मतलब फॉर एग्जांपल एनजेक्स ने खुद ने बना के डाला रहेगा, सो इट्स 12 डेज अगो, मतलब कुछ 12. डेवलप. Correct. That developer pushed the image sent to us official image. Okay. They pushed it. Okay. On this date. यहाँ पे नहीं. यहाँ पे tags वगैरह होते हैं. Taggings होती है. Okay. This version has been pushed on this time. ये ऐसा होगा. Okay. यहाँ पे pull over 2 years ago नहीं. Last pull नहीं. Push तो अलग आ रहा है. Okay. पुश यहाँ पे पुश होता है. ओके, व्हेन वी विल डेवलप एवरीथिंग आई विल शो यू. हमने अपनी इमेज पुश करी तो यू विल एबल टू सी. ओवर द वीकेंड आई डिड समथिंग. ओके, तो आई विल शो यू. अभी नहीं. ओके, ओवर द वीकेंड हमने वर्कशॉप करी थी. डीओसी के डॉक्टर हब. तो आई विल शो यू दैट आई पुश सम इमेजेस. ओके, साइन इन. चलो, आई डोंट वांट टू रीडायरेक्ट यू गाइस. हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, सी 2 days अगो 3 days अगो हमने पुश करी थी. गॉट इट. तो यहाँ पे ऐसे दिखेगी. चलो, नाउ आई विल टेल यू. आई डेवलप ऑल द इमेजेस. ये मेरी इमेज है. ओके, जो मैंने लास्ट सैटरडे को बनाई थी. एंड आई वांट यू टू पुल इट. कैसे पुल करोगे? चलो गाइस, कैन यू मेक द कमांड? आप खुद से कमांड बनाओ. ओके, दिस इज द नेम एंड यू हैव टू क्रिएट अ नेम. करो. दिस इज द नेम ऑफ माय इमेज व्हिच आई एम गिविंग इट टू द चैट बॉक्स. कैन यू पुल इट एवरीवन? Docker Sir, pull. Docker pull and image name, sir. अरे हाँ, रन करो. आई नीड आउटपुट. आई नीड आउटपुट. लेट मी फर्स्ट मैं भी चेक करके देखता हूँ फुल हो रही है कि नहीं हो रही. ओके, डॉकर फुल. Yes, yes, ओके, it is. नेम It is working. वर्किंग. वर्किंग. Yes, yes.
परफेक्ट हो रही है, 137 परफेक्ट हो MB. रही है। डॉकर इमेजेस परफेक्ट यार, क्या बात है। ओके, यहाँ पे देखो 46 आवर। नम्रता, प्राजक्ता, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन राइट, कि कब बनी है? तो यस, इट इज 46 आवर अगो, तो 46 आवर का होगा, दिख रहा है। गॉट इट? Okay. ओके, Sir, नाउ during आई विल, hello, हाँ during deployment time, this activity will done, right? Means हाँ, push and pull. करेक्ट। ड्यूरिंग Okay. डेवलपमेंट कब बनी थी, image कब क्रिएट हुई है, हु इज द डेवलपर, वी कैन चेक ऑल दिस थिंग्स, हाउ मच इज द साइज, आई कैन से दिस nginx and this is official, okay, and this is the one which we developed. Got it? Got it. And how we maintain the versions of image? अरे यार, सब सिखाऊंगा, अभी नहीं, सब सिखाऊंगा। Okay, sir. This is your first day, right? Yes, yes. है ना, बट आई विल से द आंसर, ये लिखा तो है, कैसे मेंटेन करेंगे, In लेटेस्ट लेटेस्ट tabs, लेटेस्ट 7.09। आई विल टीच टैग लगाएंगे ना, टैग्स लगाएंगे। Okay, with using tags. गाइस, टुडे वी डाउनलोडेड 1 2 3 4 5 इमेजेस डाउनलोड कर दी। वर्चुअल मशीन की तो एक भी नहीं होती आज, करेक्ट? इफ आई विल गिव हाफ एन आवर ब्रेक तो भी नहीं होता। गाइस, यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड डॉकर? Yes, sir. अब Yes. कुछ चला Yes. के, Yes. 5 मिनट मोर टाइम, कुछ एक प्रैक्टिकल कर ले। Yes. बोलो बोलो, फास्ट फास्ट, Yes, sir. Yes, sir. है ना? 5 मोर ब्रेक, ओके। कल छुट्टी है तो कुछ मजे लेते हैं आज। आई एम जस्ट रनिंग द कमांड डॉकर रन इंजन, सिर्फ ये कर, ओके। अच्छा चलो, who will explain क्या हो रहा है इस कमांड से? बोलो एवरीवन, डॉकर रन इंजन, क्या होगा इससे? so it will Create the pulling, it is container. pulling the The image from the engine. Docker hub container. and running the container. लिखो, चेक में लिखो, गलत आंसर है क्योंकि, लिखो लिखो, गलत आंसर है। Sir, it will just create the container from the अरे existing. लिखो, चेक में लिखो सब, एवरीवन गाइस, एवरीवन, आई नो सम पीपल नो द करेक्ट आंसर, बट कुछ का गलत हो गया है, इसलिए तुषार गलत हो गया है। राइट इट गाइस, राइट 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 इट, राइट इट, राइट इट, राइट इट, राइट इट, राइट इट, राइट, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, राइट इट, प्लीज राइट इट। अनुराग का आंसर बिल्कुल सही आया है, ओके। अनुराग हैज गिवन द वेरी गुड करेक्ट आंसर, इट विल क्रिएट द कंटेनर विच वी ऑलरेडी पुल्ड। गाइस, हमने पहले एनजीएक्स तो पुल कर ली ना, करेक्ट? वो, इट विल नॉट गो टू द डॉकर हब। नाउ सी द आर्किटेक्चर गाइस, सी द आर्किटेक्चर, ओके। आई एम पुलिंग, शोइंग द आर्किटेक्चर अगेन। कहाँ गया भाई यार? यस, नाउ व्हाट विल हैपन, वी ऑलरेडी डाउनलोडेड द इमेज, तो इमेज तो यहाँ पे ऑलरेडी है, करेक्ट? लास्ट कमांड में हमने ऑलरेडी पुल कर ली थी, तो व्हाट हैपन, एज सून एज वी विल रन द डॉकर रन कमांड, डॉकर डेमॉन चेक, ओके, इमेज तो मेरे पास है, वो यहीं से यहीं आ जाएगा, इट विल नॉट गो टू डॉकर हब। गाइस अंडरस्टूड, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, तो फिर कर देते हैं, डोंट वेट। डॉकर रन nginx, docker run nginx, docker run nginx, enter, okay, perfect, it is up and running, got it, it is up and running, okay। सर रन कर रही है तो दिखना भी चाहिए, nginx सर्वर दिखाओ, दिखाओ भाई, कहाँ है nginx सर्वर? रन तो हो रही है, Public IP स्टार्टेड आ रहा port. है, Docker पोर्ट नंबर PA. तो चेक करें। दो प्रॉब्लम है भाई, अगर मैंने यहाँ पे, तो मैं टर्मिनल पे चल रहा है, इफ आई विल से कंट्रोल सी या बाहर आऊंगा तो वो बंद हो जाएगा, व्हाट इट, तो डॉकर पीएस कमांड अभी नहीं चलेगा, Right. एग्री? Good. Yes. okay, it will not work, one problem, second problem, चलो, आई एम कमिंग हियर, ये आईपी है, दिस इज द आईपी ऑफ माय मशीन, चलो चेक करते हैं। आई एम गिविंग द आईपी टू यू, डबल कॉलम, No, both is not. चल रही है क्या? नहीं ना, एप्लीकेशन चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, करेक्ट, नॉट वर्किंग, राइट, नहीं चल रहा, ठीक है, बट यार एप्लीकेशन तो चल रही है, एप्लीकेशन तो चल रही है,
So we haven't Correct. mapped the port yet. Mapping नहीं हुई है। Correct. host to container. इसका nginx container is running, but भाई वो बाहर नहीं गया है, मैपिंग नहीं हुई, ये पोर्ट मैपिंग इज नॉट डन। गॉट इट? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर nginx डॉकर रन सेम है, ये कमांड चल के रन किया था तो आउटपुट नहीं दिखा था। ओके, नाउ डॉकर रन -p, पोर्ट ओपन कर रहा हूँ, 80 डबल कॉलम 80, Colon 80. बस 80 का वर्चुअल मशीन पोर्ट will be get mapped with the virtual machine with the container port. Okay. Correct. This is what I have written in my 50. docker run -p 8080 मैप कर दो, चला दो। ओके, इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ। ओके, कंट्रोल सी करा। ओके, ठीक है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस कमांड। आ गया। Yes, I feel you are able to understand the difference. Docker run nginx, docker run -p 8080. Okay, Yes, we I are am running this defining port. command. Okay, mapping the port, done हो गया, सेम आ रहा है। अब आउटपुट आ रहा है, व्हाट इज शोइंग, ये सब तुम्हारी आईपीज है, whoever is accessing my nginx ना, उन सब की आईपी दिख रही है। गॉट इट? चल गया सर। राइट, हो रहा है एक्सेसिबल। Yes. यस, nginx चल रहा है मेरा, तो करेक्ट, मेरा nginx चल रहा है। और यस, whoever is accessing उनकी आईपी दिख रही है, ये रही 26 अगस्त को यहाँ पे दिख रहा है, ये इसने ही, दिस पर्सन इज एक्सेस दिख रहा है। गॉट इट? कोई एप्पल से एक्सेस कर रहा है, कोई मोबाइल में, कोई कर मैकबुक में कर रहा है। यस, ओके, अंडरस्टूड। मीन्स माय एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग विद दिस। अब चलो, नाउ अगेन प्रॉब्लम ये भाई, ये तो यहाँ सामने दिख रहा है, अगर मैं कोई दूसरा कमांड रन करना होगा तो आई हैव टू पुट कंट्रोल सी। अब चल रहा है, बताओ, इज माय nginx वर्किंग? No. No. नहीं, तो हाउ टू वेरीफाई? docker ps, PS. docker ps a command. Okay, with the help of that we can Then understand that running process नहीं है। okay, अब it is not showing here, what I have to put it so that my -a. all image -a. -a add होगा। -a, okay, so I can say that yes, all archived images is also showing। ये 24 second ago ये image complete हो गई, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है यार, ये क्या है, जोवियल पेस्टोर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? The name So of that container. basically, Author name. whenever we don't give the name, it will just give the random name to the container. कुछ साइंटिस्ट का नाम है या कुछ एनिमल नेम या कुछ some names will come randomly and it will be allocated। अब दो रिक्वायरमेंट है, guys, I have two questions and I will give a right away class work to you। मुझे इस नाम को चेंज करना है, I want to give my name, ये अपने को Batch-40 नेम देना है। गॉट इट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, I want to change the name, first requirement, I want to change the name, okay, to Batch-40 करो। ओके, पहली रिक्वायरमेंट। ओके, और सेकंड रिक्वायरमेंट है, नहीं अभी पहली तो कंप्लीट हो, चलो गिव मी द कमांड। एवरीवन, 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 हाँ हाँ, बताओ। अरे Give गूगल, the चैट com जीपीटी सब है यार। गाइस डोंट रीड द चैट आंसर, मत करो चैट का आंसर रीड, गो टू गूगल, यू विल बी 10 सेकंड लेफ्ट, चलेगा, बट मेक योर ओन आंसर। ओके, जाओ गूगल पे जाओ, डोंट रीड द चैट आंसर, डोंट फील कि मुझे नहीं आता। गाइस ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं आता। ओके, अगर इफ यू थिंक लाइक इट कि यार सर आई डोंट नो, हमेशा यही सोचोगे। गाइस आर यू एग्री, यस नो? Yes, sir. राइट, इस बंदे को तो पहले से, अरे पहले से कुछ नहीं आता, तो सब सीख के आया है। उनको पता था कि कल डॉकर पढ़ने वाले, तो उन्होंने 5-10 मिनट डॉकर पढ़ लिया। करेक्ट, उन्होंने मेरी वीकेंड की वर्कशॉप अटेंड कर ली। करेक्ट, यस नो? बस वो थोड़ा सा आगे भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई, होगा, सब कुछ होगा। कूल, चलो ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम अगेन कमिंग टू माय, सब कुछ मेरी पीपीटी में, डॉकर रन, यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं प्रॉपर, सी दिस कमांड। अब ये कमांड धीरे धीरे कमांड बड़ा होगा। ओके, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, यहाँ पे मैंने दे दिया Batch-40, ठीक है। कोई वॉट एवर द नेम आई वांट टू गिव, आई कैन गिव। गॉट इट, यस नो? Yes, sir. ओके, नाउ आई एम गोइंग हियर, रन करा, इंटर मारा, डॉकर चल रहा है, डॉकर इज माय मींस nginx कंटेनर इज रनिंग। भाई एक बार रिफ्रेश कर लो कोई, तो योर आईपी वेलकम, प्लीज रिफ्रेश। चल रहा है, यस चल रहा है। किसी ने विंडोज से करा, किसी ने सफारी से करा,
यस, किसी ने एप्पल से करने की कोशिश करी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केस कंफर्म नहीं चल रहा है। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। यस, आईपीस आर कमिंग इन सिटीज वर्किंग, परफेक्ट, आई एम मेकिंग इट अगेन, बंद कर दिया मैंने। ठीक है, यस भाई, एनजीएनएक्स इज वर्किंग। चला तो तीनों कमांड से था, करेक्ट? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? गाइस बोलो, चला तो तीनों कमांड से था, इट वाज वर्किंग विद ऑल द थ्री कमांड्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो, वन बाय वन, गो अहेड। First, सर it फर्स्ट just कमांड it में just सिर्फ started. हाँ, इसमें 10 रन कर दिया था, ठीक है। सेकंड में इन द Code सेकंड वन mapping. Code वी mapping we पोर्ट did the क्रिएट द portal. पोर्ट। पोर्ट अलोकेट कर दिया था, ठीक है। इसमें पोर्ट भी अलोकेट कर दिया और नाम भी दे दिया। भाई क्यों कमांड इतना बड़ा हो जाता है? कमांड इतना बड़ा क्यों हो गया बताओ? कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते गए। गॉट इट? यस नो? गाइस एवरीवन अंडरस्टूड? यस नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाइस, ओके गुड, थैंक यू। चलो अब हम क्या करते हैं? बस ठीक है, हो गया बस। और पढ़ना है कि 5-10 मिनट और टाइम है? यस नो में आंसर दे रहा हूँ, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. एक के पास है, फटाफट 10। नो वाले कितने हैं? सिंपल से पढ़ो, नो Yes, वाले sir. दो चार लोग आ गए तो Yes. सब यस वाले Yes, हैं। हाँ sir. सर पढ़ा रहा हूँ। कल छुट्टी है, 5 मिनट और। ओके चलो, 5 मिनट और। यस वाले बहुत लोग हैं, वेरी गुड। मजा आ रहा है तो फिर पढ़ ही लेते हैं ना 5 मिनट और सही। जैसे होता है ना मूवी, सर मजा आ रहा है, मूवी देख के कहते आज सोएंगे, राइट? तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा देख ही लेते हैं, ठीक है। चलो गुड। जेंकिंस ऑन डॉकर, नहीं यार अभी नहीं, वो कल करेंगे उसको। आई हैव टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। मेरे को अभी ये डॉकर ही इसको एनजीएनएक्स पे कंप्लीट करते हैं, ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, माय एनजीएनएक्स इज रनिंग, ओके। नाउ आई विल अटैच द वॉल्यूम। होता है ना कि सर अब चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर मजा आ रहा है बट मेरा मैनेजर मेरे सर पर नाचेगा, ठीक है, थोड़ा सा नचा लो यार 2 मिनट का। तो उसको भी बैठा लो, देखो वो अपनी दादी को बैठा के बैठे हुए, तो तुम भी अपने मैनेजर को बैठा लो, आज कई चीजें करते हैं। पहले पहले होता था, मेरे क्लासमेट में एक बंदा था, वो मम्मी दोनों साथ में पढ़ रहे थे। मैंने कहा भाई क्या सच में? तो बोलता हाँ सच में। चलो गुड। नाउ व्हाट आई मेक इट, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन 60 MB की एज्यूम कर लो, 60 MB की है, कोई सही देख के बता देना, ठीक है। बट नेटफ्लिक्स के अंदर 60,000 मूवीज हैं, करेक्ट? एग्री? Yes, sir. ये सारी मूवीज कहाँ रखी है? कहीं तो स्टोरेज में रखी है भाई। 60 MB में इतनी सारी मूवीज तो नहीं आएगी, करेक्ट? तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इट इज अवेलेबल इन सम वॉलेट, करेक्ट? Yes, sir. Perfect. Yes, it is available in wallet. What the same thing I am doing it. I am creating one folder. Okay, मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है डॉकर nginx और एचटीएमएल। एक फोल्डर बना रहा हूँ, डायरेक्ट कमांड है mkdir कमांड 2 फोल्डर्स बनाने का, ठीक है। मैंने सिर्फ फोल्डर बनाया, ठीक है, इंटर मारा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर गया, आई वेंट इनसाइड इट, ठीक है। यहाँ पे एक मैं फाइल बना रहा हूँ vi, सर आपने mkdir cd नहीं किया। Sir, same copy. सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। cd doc डॉकर, ओके, html, ठीक है। इंटर, मैं आ गया इस फोल्डर में, गॉट इट? देख रहे हो मतलब? ठीक है, गुड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम क्रिएटिंग a vi, okay, I am just opening the, I am just creating a file vi html, okay, html index.html, index.html। what is index.html? क्या होती है? So the landing web page when we hit the IP it Nginx, comes. main index. Correct. Home page of any of the website. Okay. तो अभी तो मेरी my website is running like this. Welcome to Nginx आ रहा है, ठीक है। अब now I'm customizing it. मैं यहाँ पे एक simple सा customize page रखता हूँ। I'm taking this page, okay, and I'm just changing to your name, okay। यहाँ पे रखते हैं Batch-40, ये मेरे Batch-40 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। With बोलो भाई अपना नाम बोलो, anyone, 2-3 people, बिरजू, प्राजक्ता, हर्षिता, नहीं हर्ष, हितेश, HITS, बोलो यार, नाम बोलो, नाम बोलो। Vishal, Also, राज, ओके, कार्तिक, KRTIK, ओके चलो। एक और नाम बोलो बस, लास्ट Nimrata. लास्ट नाम बोलो जिसका, Time. नहीं नहीं, गर्ल का नाम क्या नाम है? Namrata. NAMRAT, ठीक, चलो
ओके, ब्रॉट यू द डॉकर इन फ्रंट ऑफ नंबर। ठीक है, सबके नाम लिखे, टेंशन मत लो, 40 लोगों के नाम नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, good. So I just copy the name, एक HTML पेज है, and I just put it here, and that's I just save it. Now guys, what I did, I created a volume. ये एक वॉल्यूम है, assume करो एक मूवी है नेटफ्लिक्स की, ये एक वॉल्यूम है, ओके, ये एक प्ले स्टोरेज, ओके। नाउ आई एम अटैचिंग दिस स्टोरेज विद द ओरिजिनल होम पेज ऑफ द nginx, ओके। Earlier it was coming like this, yes, no, ऐसे ही आ रहा था nginx, Yes, Yes. sir. right? Yes. Okay, now what I'm doing it, I'm just taking this command, कौन सा command है? This, who will explain me this command? आ जाओ, come up into the picture, then explain me. थोड़ा सा आप कमांड बड़े होंगे, ठीक है, आप बड़े करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले था लाइन नंबर 690, अब 691 लंबा कमांड, ठीक है। Guys, who will explain? Go ahead, आ जाओ, come into the picture. Docker run, Yes, sir. एक मिनट, ठीक है? Docker run, ठीक है, मैं उसको थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, तो it will be very easy for you. अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये बोल, देखो रमेश को नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? अरे यार, नहीं नहीं हाँ, यार। आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है, रमेश आ रहा है एक्सप्लेन, सर। आ Okay, रहा है, चलो एक्सप्लेन। so using this Docker run command, we are running the Docker with the name Docker Nginx. We open the port 8080. Correct. So we are using in the detach mode using the -d and Correct. using -d means detachment. Earlier, I was able to see all the logs in my screen. Now I am writing -d so that all logs will not be visible in my screen. मेरी स्क्रीन में दिखेगा ही नहीं, बैकएंड में चलेगा। Okay, Crash mode cool. होगा। yes. So हाँ, using the -d, it is running in the detach mode, and going forward -v for the volume attachment. We are providing the where we added our HTML page. So we are provide that location Docker Nginx. Uh, to VMware where वर्चुअल मशीन डबल कॉलम कंटेनर, तो वर्चुअल मशीन और डबल कॉलम कंटेनर का दोनों दिख रहा है। Got it? yeah. Clear? So in the Perfect. first, okay. हो गया यार, हो गया, अब क्या? चलो, let me So run it. Enter. My okay. God, something is failed. फेल हो गया, चलो रीड करो, रीड इट एंड गिव मी द आंसर। यही तो असली असली लर्निंग है। The container Already Same using. container name as well. कंटेनर नेम सेम हो गया नेम Container कंटेनर। name is already in use. user share engines HTML में जो HTML फाइल है उसको perhaps we have to delete. रॉन्ग आंसर। There is already container used name. by that name. डॉकर एनजीएनएक्स तो अभी 2 मिनट पहले भी तो बनाया था, करेक्ट There. कपिल? Yes. डॉकर Yes. एनजीएनएक्स तो अभी 5 मिनट पहले बनाया था, फिर कैसे बनाओगे? ऑलरेडी कंटेनर बन चुका है इस नाम का, तो यू हैव टू क्रिएट ए न्यू नेम, Exactly. डॉकर एनजीएनएक्स कपिल। ओके, कपिल इज ऑन द कैमरा, तो मैंने कपिल का नाम ले लिया। इज दैट ओके कपिल? Yes. Yes. है ना? आई एम प्रेसिंग इंटर, इंटर मारूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? टेल मी। चलेगा। चलेगा। अब चलेगा पक्का? चलो ट्राई करते न्यू कंटेनर क्रिएट होगा इसमें। चल गया सर। हो गया, डन भाई डन। ओके, चलो हाउ टू चेक इट, क्या कमांड है? डॉकर Docker पीएस, images. Docker डॉकर PS. पीएस, परफेक्ट, 10 सेकंड अगो चला। डॉकर nginx कपिल नेम इज मम्मी। ओके, वेबसाइट पे तो जाके चेक करो क्या चल रहा है। अरे नहीं आ रहा, आ गया, बैच 40, योर नेम्स आर कमिंग, गॉट इट, माय कस्टम वेब पेज विथ माय वॉल्यूम। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एज वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं वॉल्यूम अटैच कर। भाई मेरी क्लाउड डेवऑप्स की वेब एप्लीकेशन इज ऑफ 62 MB की है, ठीक है, बट यू कांट बिलीव मैं उसमें 2 GB का डेटा रोज ऐड करती हूँ। योर वीडियो राइट, रिकॉर्डिंग करेक्ट, यस नो, कैसे करते हैं भाई? ये वॉल्यूम पे करते हैं। अभी हमने वी आर डूइंग इन ए बेटर वे। वॉल्यूम अभी अपन इन द करंट सिचुएशन आई एडेड द वॉल्यूम, मैंने अपनी करंट लोकेशन पे वॉल्यूम रख दिया है। इन माय केस माय वॉल्यूम इज माय S3, ठीक है भाई। इसमें अगर मैं 2 GB रोज रखूंगा तो मेरे को वर्चुअल मशीन ऑल्सो बिग चाहिएगी, करेक्ट? यू अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम? Yes. भाई कहां से लाऊंगा इतनी बड़ी मशीन, इट विल बी हेवी चार्जेस। तो मैंने क्या करा, S3 के अंदर मशीन वॉल्यूम ही है, बट S3 वॉल्यूम को S3 से अटैच कर।
Got it? You understood the idea of our application, Cloud DevOps Hub? Yes. सबको आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. यही अपन लोग इसी को आर्किटेक्चर डिजाइन कहते हैं ना, करेक्ट? यही तो आर्किटेक्चर की सोच से होगी, आर्किटेक्ट ही तो डिसाइड करेगा कि कहाँ रखना है, करेक्ट? फ्रेशर होगा तो वो बोलेगा सर यहीं रख देते हैं, ठीक है यहीं रख दो। कोई और थोड़ा दिमाग लगाएगा तो बोलेगा S3, फिर S3 में बोलेगा कि सर नहीं बकेट की स्टोरेज क्लासेस यूज करते हैं, थोड़ा और पैसा बचाएंगे, सब स्टैंडर्ड में रखेंगे तो सब इट विल बी चार्जेबल, करेक्ट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड में रखेंगे तो इट विल बी हाई चार्जेस, थोड़ा बहुत ग्लेशियर में रख देंगे, बैच 40 स्टूडेंट को भी स्टैंडर्ड में रखेंगे, बाकी को ग्लेशियर में कर देंगे। Yes. Yes, sir. एवरीवन Yes. Yes, sir. पढ़ा है ना? Yes, sir. S3 पढ़ा है, राइट? गुड, थैंक यू। चलो नाउ माय कस्टम पे। अब एक और रिक्वायरमेंट है भाई, ये इंडेक्स और एचटीएमएल जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, ओके, एंड जनरेट वन वेबसाइट, कुछ अच्छी सी सुंदर सी वेबसाइट जनरेट करो, ओके, और गो टू योर डेवलपर, वेब डेवलपर, या गूगल पे जाओ, ओके, गो टू गूगल, गूगल पे जाओ, ओके, इसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज कॉपी करो, इंस्पेक्ट, कॉपी करो पूरा, कंट्रोल ए पूरा कॉपी करो, ओके, और पेस्ट इट इनटू द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अदरवाइज आई एम गिविंग यू, ओके, फिशिंग नहीं करना, ओके, आई एम गिविंग यू द कोड। I'm taking the one HTML page code. You can take it from ChatGPT anywhere, wherever you want. Okay, I copy that. Guys, see my screen, see my screen, see my screen. LS. Guys, see my screen, see my screen, please. Everyone, see my screen. VI index.html. Okay. And I'm deleting everything from this. Okay. I am putting I. और मैंने यहाँ पे गूगल का जस्ट गूगल पेज आई कॉपीड द एचटीएमएल कोड ऑफ गूगल पेज, आई पेस्टेड हियर इन सेव। ओके, नाउ चेक इट, क्या हो रहा है? व्हाट इज शोइंग इन गूगल, व्हाट इज शोइंग इन द वेबसाइट? क्या शो कर रहा Google है? कर Google. Google logo. Earlier we started like this, फिर हमने कस्टमाइज करी like this, and then we can customize like this, और अब तो वेब सर्वर का पेज रख दो। करेक्ट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, बोलो तो, तुम बोलो तो, आई विल गिव द www.cloud.devops। एक बार करा था हमने लास्ट वीक में, अच्छा इधर CLOUD क्लाउड डेवऑप्स की वेबसाइट का कॉपी कर लो, index.html पेज, यहाँ से राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, पूरा पेज कॉपी कर लो, कंट्रोल ए, ओके, इसको पूरा कॉपी कर लो, ओके, एंड पेस्ट इट, पूरी वेबसाइट आ जाएगी। यस नो? एग्री? यस नो? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है Yes. sir. Yes, sir. आ रहा है. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. अब ये मत पूछना कि सर ये पेज कैसे बनेगा, भाई ये वेब डेवलपर विल क्रिएट, ओके, दिस इज नॉट अवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है। यस नो? Yes, sir. Yes. यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, ओके, वेब डेवलपर विल क्रिएट, ये मुझे भी नहीं आता, मेरे वेब डेवलपर ने बनाया, मेरा वेब डेवलपर मतलब मेरा स्टूडेंट। ओके, चलो, ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, एंड आई होप यू एंजॉयड। हाउ वाज द सेशन? कैन आई गेट अ फीडबैक? कैन आई गेट अ फीडबैक एंड देन Q&A सेशन? क्या बात है, वेरी गुड guys, I need a feedback and then we will move into the Q&A. How was the today's session? एक बंदा काव्या is telling document चाहिए। Kavya, all the documents PPTs are available in LMS system. Okay, let me download and give it to you. This is the PPT you are looking. I am downloading and give it to you. Share, download, सर ये कैनवा का done. एक्सेस नहीं है क्या हमको? Canva का करोगे यार, तुम्हें थोड़ी सर ना एडिट करना है। रिवीजन एंड नोट्स फॉर ओनली फॉर द पीपीटी। कौन सा क्या चाहिए बताओ? मतलब कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अगर पीपीटी वैसा मिले, जस्ट फॉर थरो बिरजू, रिवीजन। बिरजू, you are my registered student, correct? यस तुम्हारे पास सारे पीपीटी सब कुछ है ऑलरेडी, पता यस है कि नहीं है? है सर। है ना? मैं बताऊं तुम्हारे पास है कि नहीं है? अरे है नहीं है बिरजू?
है सर। है ना, तो बस कैनवा से, कैनवा में तो तुम एडिट कर लोगे ना, कैनवा का क्या, मैं कैनवा भी दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, आई विल गिव दिस कैनवा ऑल्सो। तुम्हें धोने जाके प्रेजेंट करना है, कैनवा इज गुड फॉर प्रेजेंटेशन। ओके, चलो आई एम गिविंग हियर, पढ़ने के लिए तो पीडीएफ इज इनफ ना, तो आई एम अपलोडिंग द पीडीएफ। गाइस नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, हमारा डॉकर जेंकिंस जॉब मॉड्यूल, दिस इज अ मॉड्यूल 4, सी हियर। डोंट आस्क कि सर पीपीटी कहाँ गया, बहुत सारे पीपीटीज हो गए हैं, ओके, 58 डेज के, यू कैन सी हियर, ओके, डे 0 का डिटेल्स आर हियर, फर्स्ट मॉड्यूल डिटेल्स आर अवेलेबल हियर, ओके, लाइनेक्स की पूरे पीपीटी वीडियोस रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल हियर, हियर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वीडियोस पीपीटीज एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। मॉड्यूल 3 एडब्ल्यूएस के पूरे रिकॉर्डिंग पीपीटीज आर अवेलेबल हियर। वी कंप्लीटेड द गेट गिटहब जेंकिंस, तो गेट गिटहब जेंकिंस के एक हफ्ते के पीपीटी रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल हियर। नाउ डॉकर, ओके, डॉकर अभी खाली पड़ा था, नाउ आई एम अपलोडिंग इनटू द डॉक, ओके। आई होप नो वन विल आस्क कि सर पीपीटी कहाँ है, भाई डॉकर के टैब के अंदर है, गॉट इट, यस नो, यस Yes, सर। sir. यस यस। सर। Yes, व्हाट्सएप sir. में पूछेगा तो नहीं कि क्या है, नहीं, ओके, बिकॉज इट इज अवेलेबल इनटू द मॉड्यूल 5 और डॉकर टैब, ठीक है, डॉकर, मैं उसके आगे पीपीटी लिख देता हूँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। रिकॉर्डिंग, भाई रिकॉर्डिंग दूंगा यार, मैं कंप्लीट तो होने तो, क्लास कंप्लीट के बाद रिकॉर्डिंग आएगी ना, हाउ कैन आई गिव इट बिफोर दैट, ठीक है, ओके, एंड लेट्स सी द फीडबैक एंड देन Q&A। गुड, अंडरस्टूड, थैंक यू शिवा, ओके, वेब पे सेशन वाज ग्रेट, ठीक है, रियली गुड, गुड सेशन, थैंक यू। हाँ, कहीं तो चैट जीपीटी थोड़ा बहुत चल रहा है बंदे का, अरे गुड 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 गुड। ask me the question about the meeting, amazing session, thank you, thanks a lot, guys, everyone understood, okay, so over the holiday you have to practice little bit, whatever I did you have to do the same thing, okay, and you can do all the same thing, here are commands, sare commands, okay, ये नहीं व्हाट्सएप दे पे रहा, आई देना डोंट, सर। व्हाट्सएप पे देना है, सर व्हाट्सएप पे ये दे, सर एक जो हमारे क्लास का जो गूगल क्लास है ना सर, उसमें ये कहाँ पे चेक करते हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गूगल क्लास का क्लास कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं, ओके गाइस, एवरीथिंग ऑल द लिंक्स इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सारे लिंक्स रखे हैं, ओके, एलएमएस चलाना नहीं आता, स्टेप 0 देख लो, कैसे रजिस्टर करना है स्टेप 1 देख लो, ठीक है, कैसे लॉगिन करना है, क्लाउड डेवऑप्स की वेबसाइट पे जाओगे और यू कैन बुकमार्क दिस, सिंपल, पीपीटी रिकॉर्डिंग इस लिंक पे मिल जाएंगे इसके, ओके, लाइव क्लास का लिंक यहाँ पे मिलेगा, गिटहब का लिंक ये रहा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी सर हियर, क्लासरूम, तो यार क्लासरूम के लिंक पे जाओगे तो इट विल बी ओपन द क्लासरूम। अब बताओ, ये तो केजी वाले बच्चे यूज करते हैं, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर, बताओ सुधीर, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा। सर ये जो आप मतलब नोट्स बनाते हैं ना सर नोट पैड पे, वो तेजस सर। अरे नोटपैड के तो मेरे नोट्स हैं, मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ यार, मैं तो लिखता हूँ ना, तो मेरे नोट्स हैं, वो तो बहुत गंदे हैं, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, अब ये तुम क्या समझोगे, फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, कुछ किसी कमेंट्स देना ना तो क्लासरूम, इसलिए। क्लासरूम के अंदर जैसे हम लोग ने कल ये असाइनमेंट दिया था, यस इट इज शोइंग 108 लोगों में से एक बंदे ने किया है, इज दिस लुक्स गुड, बोलो अच्छा दिख नहीं रहा है ये कि सर, बेकार दिख रहा है, नहीं सर किया है, लेकिन क्लास में अपडेट नहीं किया है। करो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, ओके, प्लीज डू इट, जब सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा ना तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, मैं तो सीधे एक लिंक लूंगा, पब्लिश कर दूंगा, ओके, प्लीज डू द प्रैक्टिकल्स गाइस, ओके, यस प्लीज डू इट, ओके, ये नहीं कमेंट लिख देते हो, अच्छा ओके, सम स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द कमांड, कमांड कंप्लीट लिखने से नहीं होता है दोस्त, स्क्रीनशॉट चाहिए, गॉट इट, अरे यस नो, तुम्हारी मर्जी यार, इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू राइट कंप्लीट ठीक है, योर चॉइस, बट कंप्लीटेड में मैं मार्क्स कैसे दूंगा, आई कैन नॉट गिव द मार्क, ये देखो इस बंदे ने करा है ना, तो इसको मार्क्स देना आसान होता है, क्लास वाली चीजें गौरव ने किया है, ठीक है, तो गौरव को अपन मार्क्स दे सकते हैं, ओके, गौरव का यहाँ पे आ रहा है 5 नंबर, मैंने बिना कॉपी चेक करे चलो उसको 5 मार्क्स दे देता हूँ, गॉट इट, अरे यस नो, Yes. बिकॉज उसने करा है इसलिए मैंने उसको 5 के 5 दे दिए, अगर तुमने करा ही नहीं है तो हाउ कैन आई गिव इट, ये इसलिए होता है, क्लासरूम का मकसद ये होता है, और क्लासरूम इज अ स्ट्रीम, हम लोग यहाँ पे जब रेफरल्स आते हैं तो यू विल गेट ए लिंक हियर, क्योंकि इफ आई विल सेंड ऑल दिस डिटेल इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप, प्रॉब्लम क्या होगी,
WhatsApp में मिस हो जाता है. See, WhatsApp has 100 of messages in every minute, every hour, right? तो WhatsApp मिस हो जाता है. Got it? Okay, cool. Thank you. Cool. Okay. Yeah, I uploaded the PPT, guys. Okay. PPT is also uploaded here, and I saved it, so it went to you already. Thank you. Recording will come into this link. Any question? सर जो अब डॉकर्स फॉर्म है एंड कंपोज है वो तो आउटडेटेड हो चुका है ना, लाइक पीपल यूज कुबरनेटिस. Wow, नहीं है वो पढ़ के we will go into the Kubernetes side. Okay. So no sense. Guys, come up on the camera if you want. Okay. If you want, come up on the camera, please. Yes, we will learn the Kubernetes. So Docker Swarm is not required, but I will take one practical or one project on the Docker Swarm as well. Okay, Docker Swarm और compose करके एक project कर लेंगे, एक practical कर लेंगे. So you will get an idea. हाँ Cool. सर, आई डेड वन ना, तभी वो मैं पूछ रहा था कि लाइक वो बोल रहे थे कि वहाँ पे आउटडेटेड है, किसी किसी कंपनी में यूज होता है. Kubernetes came ना तो so no need to worry about the Swarm or compose. Kubernetes पढ़ लो. 1,000 times better than Swarm or compose. Cool. Okay, guys. Lot of people has to go office. बोल रहे हैं office. ठीक है, चलो. One message आते हैं. Okay, and yeah, I'm sharing my screen again, guys. Anyone, I will upload this video on the YouTube. If anyone is not aware how to enroll for this course, you just have to come to this website, CloudDevOpsHub.com. Okay, here you will get all the details, and as soon as you will come here, join current batch, next batch option is coming. You can click here, and all the details is showing into this place. Okay, and if you are interested, you will get it. You will learn 2.5 months with me. 1,000 days recordings, access, and everything will be there. It's a morning 8 a.m. to 9:30 a.m. Live classes will happen. And enroll now. Zoom link enroll now button is also coming here. Join WhatsApp group button is also coming. Okay, so if you will click on the join WhatsApp group, you can connect with any of the admin. Otherwise, at the end, my number and my team or my number is also available here. Ekta number is here, Akansha number is here, Vikas number. You can reach out to any of us if you have any question. Cool. Sir, I have a Thank you. doubt. Thanks a lot. बोलो. चलो, I will stop the recording. Okay, and let's move into, if you have any questions, go ahead, guys.